Hi, Dee. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Evening, everybody. Good evening. Hi, good evening. Good evening. Good morning, Loveleen. Hi. Good to have you, Simrat. How are you Nice, doing? Lots of questions. Very good. Great. Hi, Priyesh. Hi, everyone. Hi, Simrit. Hi, Daishi. Hello. Do let me know when we can go ahead. I think a couple of people are still joining in. I think we can start. That's fine. All right, cool. So, Good evening, all. good evening, everyone. So yeah, ma'am, we would be getting onto with today's topics as well in just a bit, but we thought it would be a good place for us to just reflect back on a couple of activities that we discussed and also where we are with them. Because we want that, with the pace. Now, this is the fifth session that we're on to, and we've completed four. The first one that was primarily focused on setting our identity, and then we went on to Instagram to see how we can set up our community over there. And we also have seen Facebook actions in terms of creating the community on Facebook and getting our page set up completely. And we've had a lot of discussions around our content creations, the templatizations of things, and what kind of content baskets we'd want to be doing. So I thought before we move on to today's session, we'll just do a quick review of the things that are done or what is their status. So just so that we know we are in sync with the rest of the training as well. Um, because moving forward, like for example, today we are going to be discussing about reels and how do we make use of them. The upcoming ones would be on Facebook groups and so on and so forth. But before we dive into it, it's essential for us to also reflect back and see that where are we with things and if there's still any pertaining challenges. So I hope you're able to see my screen, and feel free to also unmute yourself and just give us a quick insight as to where we are with these activities. um, First things first, we had this the very first session we had on community content and branding, the action for which was primarily to focus on creating the community name, establishing the brand elements, which was logo and the colors to be decided, and also what kind of positioning we wanted for our community. So I think I can safely say that this was something that was done, or is there still anything which is still pending on it? Yeah, all of this is done. I have some questions. Mhm. Like we have to post on our page as well, or it's Yeah. because it's not automatically being done. So are we posting everything that we're posting to Instagram on our Facebook page? So if you remember, while we were doing Facebook page setup, I'd shown you a creator studio wherein I'd asked you to connect your Facebook page with the Instagram account. Now उससे Yeah. क्या होता है कि you can use that single platform to schedule and post your content on both the platforms, Facebook and Instagram, right? So I think Instagram account is now completely set up with the in terms of your bio, in terms of positioning and everything. Are you feeling satisfied with converting into professional account and all of the basic actions? Can Yeah. we say that? Yeah. Yeah. Today is our third day of posting. So Sorry. today is our third day of posting. Perfect. We started Monday. Uh-huh. And we're done with Facebook page set up with messenger automations and the call to actions, linking it with WhatsApp. Cool. Yes. So primarily, I think this is where we would want to be looking at the progress, because base Panchuka, as we had a discussion last session as well, we'd want to start seeing things getting onto the pages, both Instagram as well as that of Facebook. Taki ab from moving from here, you will be able to see कि क्या work कर रहा है, क्या work नहीं कर रहा है, and that organic growth of community should also start happening. Yes. So
Priyash, before we proceed, just to add, Lovely ma'am, this exercise we are doing so that, are the KPIs that we have set for for this training, which is essentially, growth in, like, once you have set up the page and set up the community. So it's very important to start getting followers and people to start engaging. And that growth in engagement rate and followers is going to come only when you start posting. So hence it's very important for us to be now present. And I believe the groundwork has been done, and I've been, personally seeing so many, the messages that come around, and the team is working really hard. But just to be sure, and just so that we are on the same pace, and we get best out of this training with, the sessions, the four which are left, including today's. So that was the agenda, to just reflect back on what we have done, so that everything that we want to achieve with this training is actually met. Perfect. Great. So even for this fourth point, you're saying that you've already posted for the last 3 days. Today's your third day, right? So are you doing it manually, or are you guys scheduling it as well? No, right now it's still manual. The scheduling we have to get into that yet. Right. So I would suggest that, as I'd mentioned earlier as well, agar hum in one single day or in a couple of days, we can create maximum content, and then uske baad through Creator Studio. And I'll show that to you once again if there's still a certain gap over there. Ki wahan pe jaake aap kaise you can schedule it for both Instagram as well as that of Facebook. So I would say scheduling content is to be done. All right. Yes. So, Prish, a question, because from now on until we end this program, there also has to be certain, are we also setting certain target for certain number of posts, so that we are able to review and at least give a good conclusive feedback, so that the team can, continue to post? So absolutely, and I think I had shared, in the previous sessions as well, in terms of what should it look like on a daily posting basis. I'll just reiterate that. So what we would ideally want to be doing is, once again, I would want to be having at least one picture or a short video that is to be posted on the feed, right? Then, as we talked about stories, so at least 5 to 8 narratives of the stories on a daily basis, right? Then, of course, you would want to be adding, and this is for stories, sorry. And we are going to be talking about reels today, but moving forward from here on, we would want at least 2 to 3 reels per week, right? And of course, later on, जब आपके पास ज़्यादा लोग बढ़ जाएंगे, we'll have more number of followers in our Instagram as well as Facebook page. We would want to be including live as well, which could be, once or twice a month, but at the beginning, it could be just once a month. But these 3 things on top, this is absolutely, the basic requirement कि हर दिन कम से कम एक post तो जाना ही चाहिए. And if we can shuffle between pictures, let's say if we have 7 days a week, so 3 times we can put up an image, and then we can have carousels. I think in the last session we'd also discussed deeply into what kind of carousels we can be looking at, right? So I would suggest that, when we talk about pictures or videos on the feed, so in a week, and if we're talking about 7 days, so 3 days we can have single images, right? We can have 3 days which is focused on short videos, 10 to 15 seconds, that would be good. And if we can have one carousel on a weekly basis, I think that is also, yeah. Priyesh, this is inclusive of the content calendar that the team has already made, na? Monday, Tuesday, Wednesday. So, yeah. So, Lovely ma'am, just like that should total up to this number, is what Priyash is saying. The content calendar that you already are working on. So last class, you had shown me how you have differentiated with your content as well, right? So if you're saying Monday, we're talking about, let's say, fitness, then on Monday, you would want to be having that single image for it, right? On Tuesday, if you've talked about mental wellness, then put up a video around it, right? Let's say Sunday, it's more about a generic fitness tips, etc. Then let's put that as a carousel for it. So you can divide whatever content calendar that you already have, you can pick and choose कि ये images में जा सकते हैं, ये carousels में जा सकते हैं, इनके short videos बनने हैं, right?
get things going on Lumen 5 for your basic feed content. जो videos हैं, that should be, just spend certain time, 1 hour, and you will be able to generate an entire week's worth of content from videos perspective. In fact, 4 weeks worth of content, 12 videos, 10 seconds each. It's not going to be taking much time. Single image ke liye, you will have to probably spend some time on Canva. But again, now that you have carousels, all you will have to do is go on, those stock images wala jo website hai, free pick and shutterstock, etc. Take up the relevant images and put it up in your template. So things can become into an assembly line format. All you would have to do is just ensure that somebody is sitting creating those content and then getting them scheduled, right? So this should be your, in terms of content posting, these should be your KPIs. You should be monitoring कि हर दिन ये चीजें जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, right? Are we meeting these daily metrics in terms of putting up our content? Okay. Any further So we're questions? lagging in stories. We haven't really done that. Okay, fine. Yeah, got that. So You today can I'll look also at our, share my you can mobile look phone at, screen. Sorry, yeah, go ahead. sorry, you can look at our Instagram because we want feedback today. So going forth, we know what to change, Okay, cool. So we'll do that just in a bit as well. Yeah. Once I've also shared the mobile phone screens, and because I'm going to be doing that on mobile phone, I'll also tell you, what are the different ways. Stories का मतलब खाली images upload करना नहीं. What else can you do? Even if you don't have any, let's say कि मुझे stories का idea नहीं समझ में आ रहा, we can just simply put up certain polls or certain quizzes, certain questions which can be replicated and kept on putting up on the story, right? Apart from that, since you have a little bit of hiccup in how do we schedule for both Facebook as well as for that of Instagram, let me just show that back to you. And if in the meanwhile, if anybody else is also having any questions, please do go ahead and ask me as well before we move on to today's. Prayash, can I? Yes, go ahead, Yeah. please. So एक मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग आपने जो बताया, मेरे अभी मैं जो समझ पाया, आई मीन 3 days में अगर एक वीक का कंटेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, तो 3 days तक मुझे इमेज करना है हमें. तो आप कह रहे हो कि पूरे इन 3 दिन में मुझे एक इमेज डालनी है या फिर नहीं नहीं मल्टीपल? नहीं. So 1 picture per day, इसको करेक्ट. पर डे है. और मैं कह रहा हूँ कि ठीक है. एक हफ्ते में, इफ यू हैव 7 days वी आर पोस्टिंग, तो आप एक पूरे हफ्ते में 3 दिन डिवाइड कर लीजिए जहां पे केवल इमेजेस जाएंगी. लेट्स से मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सिंगल इमेजेस गई. 1 ट्यूसडे, image per day is that हाँ means, जी, वो तो करेक्ट ना? करना ही करना है. एब्सोल्युटली मिनिमम. ठीक है. मिनिमम. एंड देन उसके बाद मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे डिवाइड कर लीजिए इमेजेस के लिए. ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे डिवाइड कर लीजिए वीडियोस के लिए. एंड संडे आप डिवाइड कर लीजिए कराउजल्स के लिए. ये तो वो हो गए जो आपके फीड पर कंटेंट जाएगा, जो ग्रिड पे नजर आएगा. स्टोरीज आपको हर दिन डालनी ही डालनी है, राइट? रील्स आप फिर डिसाइड कर लीजिए कि ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे हम 1 इमेज या 1 वीडियो के साथ साथ हम एक स्टोरी के साथ साथ एक रील भी डालेंगे, right? Reels का production can be done, for a daily basis as well. But to begin with, आप अगर हफ्ते में 2 से 3 reels भी डाल रहे हैं, it would become much more of a better exercise. And specifically, जैसे last session में we had seen that one particular video that sir had created जहाँ पे वो juice बना रहे थे of different ingredients. That kind of videos can be compressed and be uploaded on reels as well, so that उसमें ज़्यादा production time आपको ना लगे, and very quickly you will be able to run through them as well. So precisely, I mean, the way I understood is कि अगर हम अपना ये डिफाइन कर लें कि 3 दिन का कंटेंट, ये लेट्स से इमेजेस पे कौन काम कर रहा है और कराउजल पे कौन कर रहा है और रील पे, वीडियो पे, वी कैन डिवाइन ए टीम काइंड ऑफ, और उसको Absolutely. पोस्ट करना शुरू करें. Ideally यही चीज करना चाहिए. You can divide your teams, and that's a very good suggestion as well. एक ही person पे सारी चीजें नहीं आएंगी, and that could be very well And defined they and will be divided more up. focused ना. अगर मैंने बोला कि let's say I taken as responsibility कि I will work on images, तो I'll be more focused and more clear कि मेरे को images पे काम करना है. Say Absolutely. Loveleen मैम ने बोला कि ठीक है, some person who are working for the carousel, तो वो बंदा carousel पे काम करेगा for a week, और जो भी 2-3 वो content create कर लेंगे वो टीम में, and we'll be having a mass content with us, so we quickly we can post thereafter. Absolutely. That's absolutely fine. ठीक है. Okay. Any other question before I just show that content scheduling once again?
Yeah, I Um, had a question. Yeah. So, Honey G from our team, she was in my team. She created a video, and have you heard about ASMR cooking and everything? Um, have you ever heard about it? ASMR. Yeah, Priyash, it's a sound effect. Basically, it's like, when you crush something, you eat some, yeah, like, yeah. the Yeah. sound Yeah. that comes. So it's Yeah. like Yeah. a, So she Those created a eating video. videos kind of thing. Yeah, So yeah, yeah, and yeah. some got it. people break those stones, slimes, and Ha ha multiple Yeah, ha. yeah. types of ASMR that are available. So she created a video. I thought that it could, we can fit it into that category. So I just wanted to understand if we can use it as an ASMR video or a different, kind of a recipe video. I can show you the video also. Mm-hmm. If you Let me can, that would be good. Um, just do second. I give you the screen sharing access? Or let me One just. second. Are you going to be sharing it on the chat, or do you want me to make you the host? I'll send it to the Loveleen ma'am. She can go ahead and Acha, share it if that's okay. ठीक है. can you put it on the chat? That way he doesn't have to give rights. Is that possible? A link? It's actually not a link. She sent me, on the WhatsApp, but let me just. Okay. So Sure. let's I'll do just that. I mean, just share it with ma'am, and probably later on we can have a look at it. Yeah, Can you quickly just let me know, what's the length of that video? the ASMR one. Yeah. Just let me put it up. It's 1 minute 28 seconds. I just saw it. So it's a bit Right. long video. It's a longer one, right? So अगर वो use करना भी होगा, then you would ideally want it to be putting up as a regular feed post. But I think ASMR, and correct me if I'm wrong, Hitashi, over here, it could be utilized. I mean, if अगर उसको crux में कर लें in 10 seconds, 30 seconds, that could be a very good reel content, right? Yep, Right? definitely. You need not just put it for 1.5 minutes. Yeah. मतलब उसको छोटा करके ना, just the good parts, like जहाँ पे वो sizzle का, I'm sure if it's food तो वो sizzle का Yeah. noise होएगा या It's कुछ होगा actually तो very वो nice. She made it a very nice video, and the noise is very nice to hear. So I'll just go ahead and send it right away. yes. So I think, Loveleen ma'am, Priyash, Priyash, correct me if I'm wrong. It's it's good to have such mix of Mm. content on your feed, as long as it's related to health, The main, health and wellness. exactly. Because just images which right now what we have done, the template might get boring after a point Yeah, for people to look at. So it's very, it's good to have trendy stuff also going on the feed related to absolutely. our passion point, which is again. Yeah, I mean, and specifically when you'll be looking at reels, you can be very creative. The whole point of reels on Instagram is that you have to entertain the other person looking at it. So jab tak wo entertaining hai, and as long as it is fitting your niche and fitting your positioning, be as creative as possible. Right, it could be even, if somebody is fond of singing and you're singing a song while talking about or cooking something nice, why not do that? A lot of people like to sing and cook. That could also become a part of one of the content categories. So as Itaishi said, as long as it is in your niche and it is related to your main content pillars, which is could be recipes, could be fitness, could be related to those, be as creative as you can. Right. Anybody else? Priyash, might be a silly question, but then again, I need to just to get the clarification, right? So reels, you mentioned reels, sort of time we said video, short video, तीन चीजों की बात करते हैं. बेसिक क्या डिफरेंस है तीनों में? Because मुझे एक से ही लगते हैं when we नहीं. post on the Instagram. That's absolutely fine. And basically हम वीडियोस को ना 2-3 अलग अलग तरीके से अपलोड कर सकते हैं. तो एक पहला तरीका है अपलोड करने का कि आपने डायरेक्ट क्रिएट पोस्ट किया और उसमें वो आपसे सिलेक्ट करने को बोलेगा कि या तो आप वीडियो सिलेक्ट कर लो या इमेज सिलेक्ट कर लो. तो वो जाएगा आपके ग्रिड पर, आपके मेन फीड कंटेंट पर. ठीक. अब रील
दूसरा कोई तरीके का अगर आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक ऑप्शन आता है रील. रील इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएटिव प्रोडक्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम ऑल टुगेदर. उसमें क्या होता है कि अगर आप उसके साथ ट्रेंडिंग म्यूजिक लगा देते हैं, अगर आप उसके साथ अच्छे एडिटिंग लगा देते हैं, अच्छे म्यूजिक लगा देते हैं, इफेक्ट्स लगा देते हैं, देन नॉट ओनली इट विल बी शोकेस टू पीपल हु फॉलो यू, बट एक बहुत ज्यादा इन्वेंट्री ऑफ पीपल उनके सामने आपका कंटेंट आ सकता है. तो जो हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं वो जनरली हमारी जो रीच होगी वो हमारे एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स को एंगेज करने के लिए होती है. एंड हाँ, कुछ हद तक वो बाहर के लोगों तक भी जा सकती है जो अभी तक आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं. लेकिन रील्स का एक ही मकसद है कि आप उसको एक ऐसे इन्वेंट्री पर अपलोड कर रहे हैं जहां से न केवल आपके एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स भी उसे जुड़ पाएंगे, पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है. राइट. तो मान लीजिए आपके पास 200-250 ही फॉलोअर्स हो आपके इंस्टाग्राम पर, लेकिन आपकी रील की जो व्यूज हैं वो 5,000, 10,000, 15,000 भी हो सकती हैं. यानी जो लोग आपको फॉलो नहीं भी करते हैं उन तक भी आपका कंटेंट जा सकता है. तो जो ब्रांड को बढ़ाने का तरीका है, अवेयरनेस जनरेट करने का तरीका है, रीच करने का तरीका है, वहां पे रील्स एज अ सेपरेट कंटेंट फॉर्मेट वर्क्स आउट. एंड आज के सेशन में आपको वो थोड़ी क्लैरिटी और ज्यादा आ जाएगी. So means reel is something by which we can, exponentially grow our network. I Exactly. mean, Which reach is and why all. यहाँ पर इनिशियली मैंने कहा है 2 to 3 times, but ideally what you'd want to be doing कि आपको हर दिन अगर कर सके तो. And फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सोलो इंडिविजुअल क्रिएटर हूँ तो मेरे लिए 2 से 3 रील्स बनाने में भी टाइम जा सकता है. बट सिंस वी हैव सो मेनी पीपल, एवरीबडी कैन हैव अ टारगेट ऑफ क्रिएटिंग अ रील. एक से ज्यादा ना डालें बिकॉज वो रील्स अपनी एक दूसरे में ही कॉम्पीट करती रहेंगी ऑन अ डेली बेसिस. तो फायदा है कि every day 7 reels per week you should be aiming to create that, so that आप बहुत ही तेजी से उन लोगों तक पहुंच पाए जो शायद आपकी कम्युनिटी के बारे में ना जानते हो और सर्च ना करते हो, लेकिन वो ऐसी रील्स देखकर, एंगेजमेंट देखकर और हर बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, देन दे विल बिकम मच मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट द कम्युनिटी इज डूइंग. ओके. Correct. Perfect. So once again, for example, I'm just showcasing this once again so that it's absolute clarity कि ये मान लीजिए आपका पेज था and you want to be scheduling content on both Instagram as well as Facebook. So if you remember, सबसे पहले तो हमने ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाके अपने Instagram अकाउंट को लिंक कर दिया. So this is where we had gone and linked accounts and we had connected our Instagram account, and Instagram account connected है तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, which I think you all have done so far, right? Perfect. अब जब ये लिंक हो गया है, what do I want to do is, rather than going on Instagram separately, rather than going on Facebook separately to upload your regular stories or to upload your regular images and videos, आप एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें schedule कर रहे हैं. And for that, all you need to do is कि within this professional dashboard, you will find Meta Business Suite, right? If you remember Meta Business Suite, यहाँ पे ही जाके we had set up our messenger automation as well. And here itself, you will find this option that says planner. So when you go to the planner, and if you've already linked your Instagram and Facebook accounts together, see this, what kind of options come up over here. If you look at this create blue icon, uske bagal mein ek drop down hai, so you can create a post, you can create stories, you can create reels, and you can go live. तो Instagram पर और Facebook पर साथ साथ हम ये stories और post दोनों schedule कर सकते हैं. अगर आप Facebook के जरिए reels बनाते हैं, then this will only go on as a reel on Facebook. You will still have to separately upload the reel on Instagram. And if you go live, तो ये जो go live वाला button है, that is again only for your Facebook audience, not for Instagram. Instagram live Instagram के application के जरिए ही होगा, and you will see that today as well, right? So very quickly, if I just go ahead and click on create post, then you will see यहाँ ऊपर ही option आ जाएगा. Right now it is just giving me an option of Facebook, उस पे icon बना है. But if I click on this drop down, it's also now showing me skill.funfirst as an Instagram account. So if I want to be posting anything on both Instagram as well as Facebook, I'll just simply select them both. तो ये दोनों select हो गए. तो अब जो भी मैं content डालूंगा, if I add photos, for example, I'm not sure if I have anything right now, but whatever picture or photo that we add,
then that can just simply go away, right? That will go on Facebook as well as that of Instagram. Make sense? So this is what we would have to be doing, selecting both the accounts and upload schedule. तो फिर वो आपके planner पे इस तरीके से नजर आ जाएगा, right? Look at that कि ये already planned है for both Facebook and Instagram. You can schedule them to go at the same time. Very importantly, there was another option that I had showcased to you. When you are trying to publish, so you will also get the option. Let me just do some random. If you click on schedule, it will also tell you active times, right? When is it that your target audience is most active? For example, if I select this Instagram pay and choose active times, it is telling me that if I have to post something on Facebook on 8th February, which is today, then I should ideally be posting something at 7:30. Kal bhi 7:30, Friday bhi 7:30. On Instagram, it is telling me that tomorrow 9th February को आप 8:30 पे post करो, Saturday 11th को आप 8:30 पे post करो, and Wednesday को आप 4:30 पे post करो. So you can also get an idea कि आपको कौन से time पर you should be posting your content ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा reach मिल पाए. Plus another benefit of using this planner over here is that you will also get access to, अगर आप यहाँ देखो, use template option आ रहा है right on here, which is linked with Vimeo. So Vimeo is another video creation platform. So if I select that, I will be able to select a lot of different templates from here itself. I think, I'm not sure if I'd shown you this or not, but see, there's plenty, right, for video format. So आपको Lumen 5 पे जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको Canva पर भी जाने की जरूरत नहीं है. अगर आप यहाँ planner ही use कर रहे हैं, then you have this, and you can select any one of these templates and replace them with your images or with your content, or simply probably make changes to the text over here, right? यहाँ पे if you'll see, for Instagram, for personal food and drinks से related templates हैं, right? Friday So drink special. basically, we can use Facebook also as a way to create, Exactly. not just our Canva or Now, that. for example, if you look at this Friday drink special, ये drink तो एक nutritional drink दिख रही है. No, I think it's a cocktail. Let's say cappuccino day. There's a happy cappuccino day, right? And this is a coffee. Now, what you can do, although it is saying buy one cappuccino get one free, you can change the text to say benefits of coffee, right? You can use the same layout and just simply change the text. And then, for example, यहाँ donuts दिख रहे हैं, so you can utilize that. Instead of free delivery, you can say impact of sugar, and उसमें ये पीछे donuts दिख रहे हैं, so that it reflects it, right? Or you look at that, so many kinds of salads that how will you nourish your body in the new year? So, or you can simply say include healthy salads in your lifestyle, right? So सिर्फ text change करने पे, and it would be easy for you to create such good quality. They are very nice looking, good for Instagram as well as Facebook, and just make use of them, right? There's food and drink, there's health and wellness templates. If you check all of this, the yoga challenge, for example, again, make changes to the text and you can use the same background or the images that is coming up over there. Does that make sense? Mhm. The only thing that you would have to be doing, for example, if I want to make use of Vimeo and these templates, I'll select them, and if I want to customize them, they will ask me to create a account on Vimeo, login over there. तो जो free templates हैं आप उन्हें use कर लें, right, directly from here. Or there could be certain, if you see जैसे योगा चैलेंज के नीचे अपग्रेड आ रहा है, विटामिन सप्लीमेंट एक्सप्लेनर के नीचे अपग्रेड आ रहा है, then avoid using them if you don't want to be paying for those templates. Rest, there's enough for you to utilize over here जो free templates हैं, just to be changing the text and you're done. Make चेंज sense? करने के लिए मुझे इसमें डाउनलोड करना होगा प्रयास नहीं, आप इसको कनेक्ट कर लेंगे जैसे आप Vimeo के साथ, जैसे कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, and it will ask you to join Vimeo. अकाउंट लॉगिन करना right? वो अकाउंट लॉगिन आप कर लेंगे, and once you do that, you will be able to edit things on that particular platform itself, and फिर वो automatically Facebook के साथ sync हो जाएगा.
And it's a free of, I mean, these are the free हाँ, as templates. long as you utilize the free templates. अब जैसे मैंने login किया, मैंने एक account बना लिया यहाँ पर, right, on Vimeo. So whichever template that I will choose, जैसे ये मुझे customize करना है, so I will be able to customize it, and वो automatically यहाँ Facebook में use हो जाएगा. Let's see that it's happening at the moment. Excuse me, sir. Just 1 second. See this? तो जैसे Canva पे पूरी की पूरी चीजें आ ये जाती है ना. So from here itself, edit text, and you saying change the text to join our community for healthy living. And we can increase the slides if we want. हाँ, see you have this add brand, new scene. आपको new scene डालना है, तो आप इस तरीके से आप add कर सकते हैं, right? So we can get the images from the left side, I think. Exactly. You look at that text. बिल्कुल Canva जैसा है. Wonderful. Canva as well as We for can that add to music, images, edit, I mean text, everything we can आपको do. खुद अपलोड करना है, आप अपलोड कर लीजिए. स्टॉक इमेजेस चाहिए, यहाँ पे वीडियोस हैं, फोटोज चाहिए, फोटोज ले लेते हैं. फॉर डिफरेंट, लुक एट दैट, यू हैव एंटरटेनमेंट, हेल्थ से रिलेटेड पिक्चर्स चाहिए आपको, यू वांट टू बी एडिंग इट समवेयर, राइट? जस्ट ऐड, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये ऐड हो जाती है. ठीक है And ना? the best part is it is we can do only Vimeo only, right? I think Vimeo, sorry, Facebook page. हाँ, ये again, once again, so अगर आप schedule कर रहे हैं, if you're scheduling content, you come up to the planner, you've selected both Facebook and Instagram. यहाँ पर 3 options आ रहे हैं. या तो आप add कर लीजिए photo, if you already have created something on Canva or you want to be uploading a camera image, तो आपने add कर दिया. Similarly, आपको video add करना है, तो या तो आप आपकी जो images हैं, जो आपने images बनाई हैं, उनको convert कर सकते हैं, create video from image, right? Or you can upload, या फिर simply use template में जाके you will have so many different options. Let's just do it once over here. जैसे for example, we wanted to do for food and drink, right? Food and drink के अंदर fitness से related मेरे पास ये बहुत सारे videos आ रहे हैं, whichever These जहाँ are पर भी mostly Sorry? I can see they're mostly paid. Yeah, but for example, over here, fitness ad that is unpaid, and if you keep going down, this will keep on loading. So there was a lot Right. of which were coming as paid, but if you go down, there are a lot which are coming up as free. For example, this one, right? Motivate yourself to get into your fitness regime. So if I want to use this, customize it, the background video can remain the same as it is. सिर्फ text change कर दूंगा मैं. Yeah. Okay. So for example, ये home workout classes हैं. You can say instead of that, tips for home workout, right? In the next slide, it could be whatever text that you want to add. So यहाँ पे left hand side पे text, and then you can add it as a caption over here. Get up at 5 a.m. and get going, for example, right? And it will you want to reduce the font size. See, you can do all of that. You want to change the color, you want to reduce the entire duration of the seconds. तो फिर आपको Canva पे भी बार बार जाने की जरूरत नहीं है. And why am I showing this is, even if you're doing it for once in a week, sorry, 3 times in a week, and somebody is doing the work on scheduler, तो जरूरी नहीं है कि वो पहले Canva पे जाए या Lumen 5 पे जाए, वहां से वीडियो बनाए, फिर डाउनलोड करे, फिर एडिट करे, फिर अपलोड करे. आप सीधा यहाँ पर जाके find out the particular templates which are good and just let them go out, right? अब जैसे join us live है, उसकी जगह join our community, a preview, see it was just going to be coming up, and you can go ahead and save and make use of it. And the video which is there, we can also exchange, I mean customize, उनको change करके we can add our video also. You जैसे have इस the video option, जैसे मीडिया ऑप्शन है यहाँ पे ऊपर, आप अपलोड कर लीजिए, या इसी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है. So if I just simply want to record right now, I can do that as well, right? See, ये पूरा रिकॉर्डिंग का ऑप्शन खुल रहा है यहाँ Vimeo पे. So I can open up screen recording करनी है, या कैमरा रिकॉर्ड करना है, या दोनों रिकॉर्ड करना है, and I can record instantly and upload it. this is one. Yes. ये जो आपने Vimeo बताया है, ये कोई वेबसाइट है जिसको हमें लॉगिन करना है? वो यहाँ से ही आपको लॉगिन करवा देगा. फेसबुक पे अगर आप Vimeo ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली हेल्प यू टू क्रिएट एन अकाउंट. फेसबुक एज वेल एज इंस्टाग्राम बोथ? हाँ जी, ओके. नहीं, तो Vimeo Instagram पे नहीं है ना, I think. नहीं,
Instagram एप्लीकेशन पे सेपरेटली नहीं है, लेकिन यहाँ स्केड्यूलर में या प्लानर में आप अगर चूज करते हैं तो सेम थिंग Instagram पे भी चली जाएगी, Facebook पे भी चली जाएगी. Otherwise, it's only available on Facebook, huh? Facebook calendar. Facebook Vimeo calendar. is an independent site, just like any other creative sites. Yeah. Yep. Vimeo is a separate, if you haven't heard. Yeah, so you can use it. जैसे हम Canva use करते हैं, वैसे हम Vimeo भी use कर सकते हैं. और but वो Facebook के साथ connected है. जब हम Facebook का कर रहे हैं, तो वो automatically हमें हम use कर सकते हैं Vimeo. That's the bottom line. Otherwise, मैम इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है ना? सर ये Facebook पे कैसे ऑन करना है? Sorry? Like, where do we find it on Facebook? If you could just go over that. Yeah, Meta so Suite. just go to Meta Business Suite, right? And from there we came to this calendar. So once again, आप अपने पेज पर हो, right? And from your page you go to Business Suite, Meta Business Suite. From Meta Business Suite you will choose Planner. Planner पे जाके all you need to do is select कि आपको ये कौन सा content create करना है. So if you click on create post, and then from there on you'll get the option to choose कि मुझे केवल Facebook पे post करना है या फिर मुझे Instagram पर भी करना है. We will select both, and then it will give you option. आपको फोटो ऐड करनी है या वीडियो यूज बनाना है, अपलोड करना है, या फिर Vimeo का कोई टेम्पलेट एडिट करके डालना है. गुड. तो सर इसको अलग से डाउनलोड की जरूरत नहीं है. It's available on Facebook right now. Yeah. Okay. Yes, one more thing. Is it available on phone also? I think no, it's much better and it's much usable if you do it from your desktop or from your laptop. Okay, but I'm not finding it on phone. That's why I'm asking. Huh. So some of these features you'll only find on the desktop, specifically for Facebook. Or Instagram के लिए उल्टा है. Yeah, Instagram के लिए you'll find more features on the mobile. Thank you. Okay. Cool. So इसका मतलब प्रेश मैंने Sorry, Priya had her hand raised. नहीं मैम, मुझे वही पूछना था कि Okay. Facebook. Okay. हाँ हाँ वही क्वेश्चन. थैंक यू. Cool. All right. Anybody else before we move to today's activity? प्रयास एक स्मॉल सा क्वेश्चन. जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं कैलेंडर में गया और मैंने कई सारी पोस्ट वीडियो रील यहीं से क्रिएट कर लिया एंड वी कैन शेड्यूल देन एंड देयर ओनली. तो देयर इज नो सेपरेट टास्क टू बी डन बिकॉज बट यहाँ पे एक ये पॉइंट है कि मेरे जो रिसेंट में फिक्स्ड टेम्पलेट्स हैं उसमें मुझे अगर लेके जाना है देन हाउ वी कैन डू दैट. वो तो आपको कैनवा से या जहां से भी आप बनाएंगे वहां पर आप अपलोड मतलब चेंजेस करके अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे और फिर वहां पे ऑप्शन आ रहा था ना ऐड फोटो, आप अपलोड करेंगे. Understood. ठीक है. Can I just clarify everything? I think people have the same questions. Basically, and please correct me, Priyash, if I'm wrong. जब हमारा पर्पस है कि फेसबुक के पे जाके हम मंथ टू मंथ अपना पूरा स्केड्यूल करें, बिकॉज राइट नाउ अभी हम सीखे नहीं अच्छी तरह, तो we're manually posting and that can get tricky because somebody could miss, कुछ हो गया. So we go on Facebook and we create our full month's content. वो या तो हम Vimeo की help ले सकते हैं on Facebook, just like we did Canva, or we download any pictures or videos, whatever our content is, we can download. Once we've downloaded it, फिर हम अपने उस पे लगा दें, schedule कर दें कि ये first को ये हमारी 4 चीजें जानी है, second को ये by the time. And it's showing us what is the popular time on Facebook, what is the popular time on Instagram, and we do accordingly. Now, the only one question that comes saying this, they could be different times. So are we scheduling some of them scheduling to Facebook, some of them to Instagram then according to the time? How does that work? Yeah, so you get an option there itself. Even though you are scheduling the same post, same creative on Facebook and on Instagram, you can still have separate times for them. Perfect. Right? Because there could be ki Instagram ke followers become online at let's say 8:30 p.m. and Facebook ke jo followers they become online at 6:30 p.m. So accordingly, you have all the options to do that as well. Absolutely. Great. I think a couple of questions, otherwise then we can move on from this end. Yeah, let's take the final set of questions before we move on to today's. So Parnika, you have a question? Yeah. अगर हम रील बनाते हैं पोर्ट्रेट फॉर्म में 4:9:4 5 whatever
9:6। तो और इट्स वीडियो बनाई है 15 सेकंड में, तो क्या वो रील की फॉर्म में डल जाएगी या फिर मतलब आई वांट टू पुट इट एज वीडियो ओनली? हाँ, you can put it as a video itself, but अगर आप 9:16 specifically बना रहे हैं, then it's much better that you upload it on Reels. Priyash, it's an I update think recent that any it's the video same that's thing. put on Instagram is automatically converted into a हाँ, reel. So I think so whatever she's going to put it on Instagram, any video on, so even on the feed, it is eventually going to going to be appear in updated the as Reel. reels. तो अगर हमें वीडियो बनानी है तो हम नॉर्मल जो हमारा 1:1 का जो इंस्टाग्राम साइज होता है, नॉर्मल जो फीड पोस्ट का साइज होता है, तो उसमें वीडियो बना दें। हाँ जी, It's advisable to No. make it in reel size only Reels because वो format. जब reels में हाँ, दिखेगा ना तो वो छोटा हाँ, हो जाएगा. स्क्रीन साइज। So it's better to make it in 9:16 only in the reels ratio. रील्स तो चलो बाद में अलग से बनाएंगे, बट व्हाट आई एम आस्किंग इज कि जब वीडियो बनाना है तो प्रेफरेबल, जैसे पहले हमने बात करी थी कि स्क्रीन साइज के लिए हम 9:16 वाली बनाए तो अच्छा रहेगा, और वीडियो का हम ज्यादा बड़ा साइज भी ना करें तो अच्छा रहेगा, विद इन 10 to 15 सेकेंड्स रहे। अगर हम 9:16 भी बनाएंगे 10 to 15 सेकेंड्स में तो वो रील की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं, तो आप Parnika, कोई भी, that's sorry, what I'm going to Parnika, interrupt you. yeah, I'm going to interrupt you. Video and reel, consider it the same thing. yes, Bottom for line. Instagram. What Instagram says, yes, it's the same thing. because now they're pushing Now, everything for Instagram or for Reel format. तो चाहे अगर आप एक छोटा वीडियो बना रहे हो, बड़ा वीडियो बना रहे हो, Instagram will try and push it as Reel. तो बेहतर यही है कि या तो हम उसे 4:5 या 9:16 में ही बनाए, राइट, ताकि अगर वो जाएगा ही एज अ रील, इट विल बाय डिफॉल्ट बी पोस्टेड एज अ रील, देन इट मेक्स मच मोर सेंस कि हम उसको रील के डायमेंशंस के बेसिस पर ही अपलोड करें, राइट। बट रील एज अ कंसेप्ट, उसमें आपको ज्यादा, आई मीन व्हेन यू आर स्पेसिफिकली थिंकिंग ऑफ रील्स to put up a video, then you will have to be looking at a little bit of more editing, little bit of more transitioning, little bit of more all of those activities coming into picture. तो मतलब जब हम वीडियो बनाए तो फिर उसको 9:16 में डालें और वही टाइम फ्रेम रखे 10 to 15 सेकेंड्स का, क्योंकि वो रील में जाने वाला है। और जब स्पेसिफिकली रील्स बनाएंगे तो उसमें हम फिर इफेक्ट्स वगैरह डालें, वो हमारा वो फिर माइंडसेट रील्स वाला ही रहेगा। Exactly. ठीक है, Cool. ओके। So I think if there is any other question related specifically to reels, तो वो हम अभी discuss ही करने वाले हैं, and I think that should get answered. But if there's anything else apart from reels or video content, just let me know. Yes. Siddharth? या हाय प्रियाश, मेरा क्वेश्चन ये था, मैं ल्यूमन पे क्रिएट कर रहा था कंटेंट, उसमें मेरे को ये पूछना था कि उसमें टेम्पलेट का जब मैं उसमें चूज करता हूँ, उसके बाद जब मैं उसमें कंटेंट डाल देता हूँ तो वो वीडियो पूरा नहीं निकलता है उसमें, लाइक उसमें क्या कोई पर्टिकुलर ये है उसमें कि नीचे इतने एक ऑप्शन वर्ड्स आता तक? है, नहीं, उसमें अगर आप देखेंगे नीचे एक ऑप्शन आएगा कि यूज एआई टू समराइज योर कंटेंट। अगर आप उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर उस नीचे बटन पे क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन आएगा यूज एवरी लाइन, तो आप यूज दैट ऑप्शन सो दैट आपका हर एक कंटेंट, हाँ, यूज एवरी सेंटेंस में आपका फिर वो पूरा का मैंने पूरा आ यूज जाएगा। कर लिया था उसको, बट स्टिल वो सारा उसमें कंटेंट जो है वो नहीं आ पाता है देन व्हाट यू वीडियो में। कैन डू इज कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे, एक एक लाइन जो कि मान लीजिए वीडियो में नहीं कन्वर्ट हो रही है, तो आप उस लाइन पे अपना माउस ले जाइए, उसके राइट हैंड साइड पे आपको एक प्लस बटन दिखाई देगा, यू Yes. क्लिक ऑन द प्लस बटन, सो दैट विल देन गेट एडेड टू योर वीडियो फॉर्मेट। Okay. So then I do not need to put that button जो बटन में होता है, create that content, convert that into video, वो हाँ, मुझे सो दोबारा नहीं वो करना आपको है। दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay, okay, okay. उसमें वही मेरे को दिक्कत आ रही थी, वो पूरा, और उसमें कोई साइज का इशू है कि इतना कंटेंट ही कन्वर्ट होगा, कि इज इट समथिंग लाइक दैट? नहीं, एज सच ऐसा कोई उसमें इशू नहीं है, बट यू वुड वांट टू बी क्रिएटिंग एनी वीडियोस लेस देन 30 सेकंड्स के लिए। ओके, लेस देन 30 सेकंड्स। ओके, शायद उस वजह से हो रहा होगा वो। ओके, So एनी, now, sorry, we keep talking about the times for the videos, right? Where do we put longer content? How does that go as? I mean, it's not advisable any longer to go for very long videos on Right. Facebook or on Instagram. Although you can put up 90 seconds का भी आप डाल सकते हो, और sometimes when you're doing a live,
लेट्स सपोज Yeah, आपने कोई live लाइव is करा तो different. वो भी लंबा हो जाता है, बट इट्स नॉट एडवाइजेबल. लॉन्ग फॉर्म वीडियोस स्पेसिफिकली, इवन ऑन यूट्यूब वेयर वी से कि आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालो 10 minutes 20 minutes, देयर आल्सो इट इज एडवाइजेबल कि वी कीप the duration not more than 7 to 10 minutes, because the attention span of people is now going down and down and down. तो जहां पहले वो फिर भी देख लगते थे 10-15 मिनट के वीडियोस या फिर 4 मिनट के वीडियोस, दे स्टिल लाइक कि अब मेरे को 15 सेकंड में सब कुछ चाहिए. Okay. And one more thing, basically we're dividing up what we want to tell people, like that's why we can have like chapter, this is my chapter Exactly. 1, chapter 2, chapter Exactly. 3, and then people will follow that too. Right. For example, if I had to create on 5 tips on creating your resume, rather than talking about all the 5 tips in one single video, I would talk about one tip in one video and then move forward. बट काफी टाइम जब अपन वीडियो देखते हैं तो कीप वॉचिंग बोल के आता है ना लास्ट में. सो व्हाट इज दैट? दैट मींस अगर वो लॉन्गर वीडियो है तो आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू गो अहेड एंड कंटिन्यू वाचिंग द वीडियो, राइट? जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो वीडियो अच्छा नहीं है, यू विल प्रोबेबली नॉट वॉच इट, स्किप इट. अब मैं उनको वो ऑप्शन ही नहीं देना चाहता. चलो अब जितना है 10-15 सेकंड में देख के निपटा के आगे बढ़ो फिर. Right? That is in case the video is longer one. Yeah. Okay. And one more confusion I have, Loveleen ma'am, also कि जब हम उसमें अपना इस पे जाते हैं फेसबुक पे, जब हम किसी कोई नया बंदा उसको फॉलो कर रहा है हमारी कम्युनिटी को, सो वो जो गूगल फॉर्म्स की बात हुई थी वो कैसे उसमें आ रहा है? मैंने 2-3 से ट्राई करवाया था बट No, we haven't attached the Google form yet. Attach नहीं किया है. It's just that hasn't been attached yet. Yeah. Okay. So that means अभी जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो we don't have any record कि वो कहाँ पे किस टीम में क्या है हो रहा है वो. Is it something? नहीं, because right now it's really just too our early. own people, right? Yeah. It's just our IBOs that are getting together. We've literally just started 2 days ago. Yeah. Okay. Fine. Right. So there is only one option to follow. Yeah. And अगर आप उसमें कोई Google form देना चाहते हैं तो वो link in the bio, you can do that. But once of course the form gets created and you will be able to add it. उस केस में क्या रहेगा? There will be another option to join like something or join our No, there'll community. just be link in the bio में that उनका अगर आप नाम और वो सब collect करना चाहते हैं आप, तो वो fill कर सकते हैं. and किसने refer किया है, for example. So Then- I think then Priyash and will. Sorry. Then they will be able to follow us, right? Follow तो any which ways कर सकते हैं वो. They don't have to click on the link to follow, but that additional जो आप कह रहे हैं ना, अगर मुझे Google form पे किसी को लाना है, then you can give that as an additional option कि आप follow तो कर ही लो and then click on the link to fill in more information if they want. Okay. Okay. लवलीन मैम, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे कि जैसे अभी आपने कहा कि अभी हम खाली आईबीओस को कनेक्ट कर रहे हैं इसमें, सो वो कैसे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे? लाइक जब आप उसमें गूगल फॉर्म कनेक्ट करेंगे तो वो कैसे डिफरेंशिएट होगा? लाइक So Siddharth, you've seen our Google form. You've seen the form we've already created. Yes. That is email it's getting anyways. Then there's 1 or 2 questions, and the last question is a required question. Who referred you to our page? Yeah, before, so if they don't fill that Google form, they won't be able to follow us. Is it something like No, that? No. Following is independent. Follow Independent. to a page is open page. Anybody can follow. Even a stranger who nobody has referred can follow. Yeah. Okay. But the Google form की intention है कि ताकि हमें पता रहे कि वो इंसान अगर कोई आया है वो बिल्कुल न्यू लीड है या वो हम किसी ने रेफर किया है. तो अगर आप किसी को रेफर करोगे तो आप उसको बोलोगे कि प्लीज fill out the Google form. Yeah. Okay. Yeah, because ABOs don't need to do that, na? Right. Yeah. So But Priyash, अभी हम इसमें हैं प्रयाश, तो what is the best way to where should we link? We have the form ready. I've even connected it to a spreadsheet ताकि automatically जो हमारे answers हैं वो आ जाएंगे. So the spreadsheet's already going. It's on my Google Drive. So now the question is, what's the best way
to do that? Where should we post it? I know we've spoken about it, but The practically. only app, the only option on Instagram is to just put it in the as a link in the bio, right? Okay. And then let's suppose if you really want to be getting data ki kaun kahan se aaya hai, the only thing could be, you know, that every time you're having new followers, you send them a brief message, direct message on Instagram asking that thank you for joining us, and could you please click on the link in the bio to let us know about yourself. I'll add that to our welcome message. Yeah. So if you're sending a welcome message. can be one more thing, Didi, let's say when we are doing our posting and all, we can ask the CTA, I mean, call to action, to click to the link into the bio, and then the moment they will click on it, then we'll get to know ki, of I course, don't know this. if we want to do that to each. So your call to action should be very specific of generating certain engagement. If you're only asking people to fill up a form so that you come to know the bifurcation, then it's failing the purpose of engagement. It should Right. only be asked to people, let's say once they have joined the community for the very first time, as a welcome message jo ja raha hai. Okay. Right. Thank you. Perfect. So I hope that takes care of most of the questions, and we can move on to discussing There's about. something in the Yeah. chat. Sorry. In the chat. I have a question regarding Meta My business. question, Priyansh, I'm on my Meta business. I see the language as, I mean, the dashboard language is in Punjabi. I'm not able to find the option to switch to English. For that, you will have to go to your settings, Meta settings, right? And you'll have to choose preferred language. I would suggest that if you just Google this, they'll give you the exact link where you can go ahead and change your language preference. I did that actually, but okay, no problems. I'll just try searching it again. No Yeah, problem. it will give you an exact link from where you can go ahead and change your language preference. Sure. Thank you. All right. Cool. So we've talked a lot about, we've mentioned and thrown this word multiple times, jo ki reels kya hai. Let's just get into making them and understanding, you know, why do you want to create it? First and foremost, I mean, the whole trend of reels started with TikTok, right? The short form videos जिसे हम कहते हैं, and very quickly, as Facebook and Instagram usually do, जो best features हैं, for example Snapchat की stories होती थी, वो Facebook में आ गई, WhatsApp पे आ गई, Instagram पर आ गई, TikTok पे short videos चलने लगे तो Instagram ने एक पूरा reels बना दिया. So primarily the whole purpose of reels is two ways. One is to get entertained as a user. अगर मैं Instagram पे जा रहा हूँ, I would want to be watching reels and looking at reels only to feel good, only to मेरा जो mind है वो relax हो जाए. I'm not going there to educate myself. I'm only going there to find something which is interesting, right? And that is why reels have such a huge amount of engagement. अगर आपने अच्छे से किया हुआ हो, reels will reach out to maximum number of people. You'll find a lot engagement happening over there. So before we get on to creating it, there are certain things when it comes to reels. There are certain aspects. जैसे Panika was saying that if I'm creating a video for reel, then I will take care of very certain aspects जो उसमें होनी ही होनी चाहिए. Which is basically number one, आपके पास transitions आ जाते हैं. And you might have noticed कि you know, somebody is doing this उन्होंने कैमरा के आगे अपनी चुटकी बजाई and चीजें background change हो गई, right? या they are clapping and things change somewhere, or they tilt their head and एक दूसरा scene आ जाता है. What are those? Those are transitions. कि एक scene से हट के आप दूसरे scene में जा रहे हो in such a way that it feels very magical. सबसे बढ़िया चीज रील की ये है that whenever you are creating these videos, it gives people that sort of a magical experience कि अरे अभी तो ये यहाँ थे, अब एकदम से वहां कैसे पहुंच गए, या फिर अभी तक तो ये एक सेट ऑफ कपड़े में, तो अब ये कहाँ से आ गए, या अभी तक तो प्याज लहसुन पूरे फुल थे, अब ये चॉप्ड अप कैसे हो गए, राइट? सो दैट those kind of activities जब हम बात करते हैं, they are primarily done with the help of transitions. Then to make your reels even more interesting, we make use of songs. जो म्यूजिक आप कह लीजिए जो बैकग्राउंड पे आता है, पर्टिकुलरली ट्रेंडिंग सॉन्ग्स जो कि मान लीजिए वी आर नॉट लुकिंग एट सॉन्ग्स व्हिच आर यू नो हजारों लाखों रील्स में ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, बट लेट्स से जो 5000 रील्स में यूज हुए हैं, 6000 रील्स में यूज हुए हैं, उनका एक ऊपर जाने का टाइम आ रहा है, that they can very soon burst into the scene and उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे. And we don't worry if this is not making sense, because live we will be looking at that. Number 3, as short and inspirational as possible, यानी 15 सेकंड 20 सेकंड हो उतना बेहतर, right? So that you know, people can connect with it. They don't have to spend a lot of time to
get that information as well. And this is a big challenge as well, by the way, कि मतलब 15 सेकंड 20 सेकंड में मैं क्या करूं, half of the time I'll only think of कि मैं बोलना है मुझे. That is why planning a reel is also very important. If you are creating something for, let's say, 15 seconds, then what is it that you will show in the first 5 seconds, then what is it that you will show in the second 5 seconds, and then what is it that you will show in the third 5 seconds, right? ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. You should not get on to creating reels कि कैमरा खोलो और मैं शुरू हो गया, because that ways you will end up creating, आप आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा निकाल देंगे. But you should have a very clear plan. फर्स्ट 5 सेकंड्स में आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दिस, या फिर मैं ये बॉटल दिखाऊंगा सामने, अगले 5 सेकंड में मैं अपना फोन दिखाऊंगा, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. द स्टोरी बोर्ड जिसे हम कहते हैं, दैट शुड बी वेरी क्लियर, राइट? That is where it becomes important. And then of course consistency, जो मैंने आपको कहा 2 से 3 बार in a particular week, ये तो consistently होना ही चाहिए. And you should actually be able to reach a time wherein you are able to create 1 reel per day. And that is possible for you guys because there are so many creators, so many people working on it together. How is it going to help you? अगर आप लगातार reels पर focus कर रहे हैं, it will make your existing followers come to know more about your product. Plus at the same time, you're constantly hitting your impressions in front of target audiences. आप अपनी reach हर बार बढ़ाते जा रहे हैं, right? So that helps you to increase your engagement rate. Engagement rate बढ़ेगा तो Instagram algorithm आपको और ज़्यादा push देगी, right? Plus you can do certain education series, not heavily education, ज्ञान ज़्यादा नहीं करना, but very small kind of tips, educational tips kind of activity, which is going to be very relevant for you. That for example, 5 DIY recipes that you can make in less than 15 minutes. तो आपने एक टिफिन दिखा दिया, उसका नीचे लिख दिया let's say पनीर रैप, दूसरा टिफिन दिखा दिया, उसके नीचे लिख दिया आपने मूंग दाल salad, and so on and so forth. So you don't need to get into the entire recipe creation process. You can also showcase the end product in a very visual manner, right? So very, very basic actions which would be required. So rather than getting into too much of theoretical aspects, let's just get down on Instagram and do it. And I'll just share my mobile phone screen in just a bit. Right. So I hope you're able to see the mobile phone screen. So what I'm going to do, Instagram, not in short. All right. So this is, for example, a personal account that I'm utilizing, although इसको मैंने professional में convert किया हुआ है. Now see what you can do in terms of putting up content on Instagram directly. अगर आप यहाँ top पे देखोगे, there's this plus sign. You'll get the option to create. ये सारे creative products हैं. Reel, which we'll see in a bit. पोस्ट हो गए, जो अगर आपको मान लीजिए कोई नॉर्मल इमेज अपलोड करनी है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू बी अपलोडिंग दिस पर्टिकुलर इमेज, देन आई कैन गो अहेड एंड अपलोड दैट, जो अगर आपके फोन से ही आपको डालना है. अगर कोई आपके कैमरा के अंदर या फोन के अंदर कोई वीडियो है, फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस इज अ 13 सेकंड लॉन्ग वीडियो व्हिच आई टुक अप, राइट, और अगर मुझे इसको अपने अपलोड करना है, देन आई कैन डू दैट. Pretty much very easy. This is your regular post, right? जो grid के जरिए आप डाल रहे हैं. Then you have the story options. If you click on this story option, यहाँ पर भी आपके पास options आ जाते हैं. Do you want to choose something from your gallery? Phone gallery से आपने कोई picture ली है या video record किया, that you want to add on your story, or if you look at the story option, let me just put it down. I can either record something instantly, या फिर what I like to do, if you see right over here, यहाँ पर आपको ये capital A small a दिखेगा. What happens, this is a create button. So I can type, but I don't want to type. I want to make my reels, my stories look much more engaging. मैं ये चाहूंगा कि मेरी stories पे लोग किसी ना किसी तरीके से engage कर पाएं. So what I can do, if you see नीचे जो ये multi shutter options हैं, I can go ahead and keep selecting the next ones. So I select the question wala. If you want to be wishing anybody birthday in your community, so that they feel special, कि यार अच्छा इनको पता है मेरी birthday है, and you have actually tagged them,
right? Or you can use GIFs. GIFs में, for example, if I type exercise, you'll find certain GIFs or GIF videos. Look at that, जो कि काफी relevant है. And then you can add this to your story, और उसके साथ आप कोई एक text लिख सकते हैं. Don't be a slowpoke, work hard on your treadmill. Sort of like that. Then you have these over here. This track gets me. That means you can put up a song that really motivates you. Or for that matter, what is going to be relevant is this one. Ask me a question. This is something that you would have seen plenty of times. For example, ask me a question about marketing strategy, right? And then people can actually, when they look at your story, they can type their questions, you can respond to them, और वो भी आपकी story पर add हो जाती है, right? So every week you can define, let's say once you have 500,000 followers, every once a week you can define कि I will go on story and do a ask me anything series, ask me anything session. यानी your followers को दिख जाएगा that you're open right now to take up questions from them. They can keep on asking कि मुझे diet क्या लेनी चाहिए, मुझे ये क्या लेना चाहिए, मुझे वो क्या लेना चाहिए, and you can keep on responding, and ये सारे के सारे responses will come up on your story as well for your other followers to see that how engaging you are with your community. And then you have this last option जहाँ पे ये quiz आ रहा है, right? For example, if you were a vegetable, which one would you be, right? And then you can add, for example, gobi, aloo, tomato. Just try to make it little bit more engaging. यानी लोगों को आप कहीं ना कहीं से encourage कर रहे हो कि the fun element is coming up over here if you would want to be doing it. So your followers will very quickly see, अरे ये तो आसान है, and then they can add something. Or another thing could be, let's say I want to be uploading a story with an image. So let's say, for example, I use this as an image, and then agar aap dekho on top, you will find these options coming up over here. Yeah. Right? So if you'd want to be typing out something, तो आपने ये type कर दिया. For example, basement parking, right? Or what you can do, if you see this sticker option on top, so you can tag the location, or you can mention someone, or you can put up this ask me questions. आपने एक background में image डाल दी, और फिर आप लोगों को पूछो guess where am I, or guess what am I doing right now, kind of a stuff. Or you can put up polls, right? इस image के ऊपर ही आप एक कोई poll डाल सकते हो. So these options come up. Or you can have this, this slider. For example, do you like this? And then people can ये इमोटिकॉन को लेफ्ट राइट कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दिस, ये क्या हो रहा है, आपके स्टोरीज पर आपके एंगेजमेंट रेट को बढ़ाने की कोशिश हो रही है. आपको ये नहीं करना स्टोरीज पे खाली कि कुछ देख लिया या कोई वीडियो देख लिया या कोई पोस्ट देख लिया. आप ये चाहोगे कि आपके स्टोरीज के साथ भी लोग किसी ना किसी तरीके से एंगेज करें. See, all of these stickers will make your stories look more visually appealing. Plus, at the same time, you're also pushing people to take certain action. अब इसी इमेज को मुझे थोड़ा और सुंदर दिखाना है, then you will have this filter options. अगर आप देखोगे, not here, this 3 sitaras which are coming, if I click on it, then I can put up certain stickers to it or filters to it, right? ताकि वो अभी ऐसा लग रहा है बेसमेंट में बर्फ गिर रही है, right? Or whatever makes it look more good, so that जब लोग स्टोरीज पर आगे बढ़ रहे हैं उनको एकदम कैप्चर होने जा रही है ये कौन सी बढ़िया चीज है, right? So you can add such kind of things to your stories as well. All of this is going to make it look much more appealing, and people are much more likely to engage with it as well. Make sense? So I wanted to show this story part very quickly before we get on to reels. Now if I have to create a reel, अब Instagram ने ना लाइफ बहुत आसान कर दी है. Earlier you would do all the mehnat of choosing the templates and looking at trending music as well, but now if I click on reels, I'll show all the options to you. Plus sign पे click करें, reel पर click करें, and then see that what all options you are getting.
audio on top, then you have effects, then you have the timer, you have 1x video hona chahiye. Like for example, agar wo AMRR ka video is coming to be 120 1 minute 20 seconds, you can also increase the speed to 3x. यानी आपने स्लैश कर दी उसकी 1/3 कर दी वीडियो की लेंथ, right? So that can also be possible, right? Or you have this countdown timer that before I start recording, जैसे कैमरा का शटर होता है कि 3 सेकंड तक के लिए आप वेट करना before you start recording. So let's look at that, each one of them one by one. First thing what I would want to be doing is choosing a particular filter, right? यहाँ पर अगर आप देखें this effect option जो है, I would first want to be utilizing certain kind of an effect, right? Now within effects also, look at that. आप ये circle frame लगाना चाहते हैं, या if you will see disco lights आ रही है आपके चेहरे के साथ, suddenly things become very different, right? चश्मा पहना दिया, so now all of a sudden now I'm wearing chashma, you know that I'm not, but यहाँ पर आ रहा है, right? So again थोड़ी सी चीजें impacting हो जाती हैं, या थोड़ी सी चीजें को आप और ज्यादा बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं, so that it becomes much more visually appealing. Perfect eyes, I don't know, ये मेरी perfect eyes तो नहीं, बहुत ही डरावनी eyes हो गई हैं. Right? So you have all of these different kinds of effects that you can use. इसमें भी specifically if you see there's a trending option coming up over here, which means that if I use something, पहले तो ये आंखें हटा रहा हूं मैं, you guys will get scared, right? Let's say if I go for trending, then you will also find that there are certain filters or AR effects which are more in trend than the others. और अगर ये trending में है, then it is going to be better for us to use them because उससे हमारी reach बढ़ेगी. Then if I look at reels, यहाँ पर option, furthermore, अब जैसे my tiny army, right? You can possibly do certain actions, वो आ गए, या आप stretch कर रहे हैं, whatever that you try and draw, वो पूरा stretch हो रहा है. Look at that. So there's plenty of things that यहाँ पर अगर आप use करें in your filters, that can make your reels look very interesting. Comic captions, for example, everything coming up in a very comic format way. So you have to just figure out कि आपके लिए कौन सा ऐसा फिल्टर है, या कौन सा एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्पलेट है which can be beneficial for you, right? And जिसको आप हर बार replicate कर सकते हो, which can become your style. For example, one of you, let's say मनोज जी एक रील बना रहे हैं हमेशा ये Ray-Ban stories का फिल्टर लेके, and he's always talking about आज का ज्ञान with this very sorted looking चश्मा, and वो 2-3 चीजें बोल रहे हैं और ये मनोज सर के साथ stick कर गया. So that is his own style, easy to replicate. आपको हर बार नए ideas नहीं लेने पड़ेंगे. It will be very easy to replicate and go ahead and put up something out of. Make sense? Right? Similarly, you have appearances. आप और भी अपने eyelashes को बेहतर करना चाहते हो तो ये there's a lot that you can literally do in order to make your particular reel more entertaining as well as ट्रेंडिंग एज वेल. क्योंकि ऐसे ही अगर हरकतें करते हैं हम तो लोग एंगेजमेंट ज्यादा आ जाती है एंड उसकी जो रीच है वो भी ज्यादा बढ़ जाती है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वुड बी फॉर यू टू डिसाइड. 1 सेकेंड, इसको हटा देते हैं, ये क्या होता है. So Priyash, this particular one, what you're showing is something you're creating on the spot. Yes, everything that I'm doing Right. is happening on the spot. In Right. fact, what But we will then do we after can this, get a video. Yeah. Sorry? We can also download a video, choose a video, and then fix it up for a हाँ, reel. absolutely. So if I would want to be ये कहाँ uploading a से लिया video, आपने प्रयास? प्लस साइन आप जो दिखा रहे थे, can you just give me show me again so please? once you are on the page, for example, आप पेज पर आए, यहाँ ऊपर ही प्लस साइन आ जाता है. सॉरी, आप टॉप पे इनफैक्ट जो यहाँ से करिए. डीएम के पास में है ना, जो हाँ जी, मैसेंजर हाँ के जी, पास में. हाँ. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पोस्ट आ रहा है, स्टोरी आ रहा है, रील आ रहा है, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं. या फिर अगर आप नीचे देख रहे हैं बॉटम कॉर्नर में वो हार्ट आइकॉन के बगल में मुझे मेरी डिस्प्ले पिक्चर दिख रही है, वहां पे क्लिक करिए, अगेन यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा और हमने रील सिलेक्ट कर ली. ठीक. अब रील में भी 1 सेकेंड, what I was doing was uploading something or creating something on the go live. But as ma'am Is said, on top right, no, sir? yes, top right. What I can also do is I can upload from my phone gallery.
लाइव भी बना सकते हैं इससे? हाँ, वही कर रहे थे हम अभी फिलहाल। अब अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग वीडियो है लाइक दिस, सो यू कैन आल्सो अपलोड दैट वीडियो, राइट? अगर मैंने ये ऐड कर दिया, ट्रेंड ऐड कर सकते हैं ना इस वीडियो हाँ में भी, जी, ट्रेंड्स उसको एंड आप जो उसमें आप म्यूजिक डाल सकते हैं, आप उसको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कुछ और बीच में लाना है, कोई ऑडियो डालना है, ये एग्जिस्टिंग अगर वीडियो कोई आपके पास है तो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितना हो सके आप इंस्टाग्राम का जो रिकॉर्डर, ये मल्टी शटर है, इसी को ही यूज करके लाइव रील्स बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिकॉज अगर आप जितने ज्यादा इंस्टाग्राम के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उतनी ज्यादा आपकी रीच बढ़ती है। ऑलराइट, so let's say now this is look at that, ये मल्टीवर्स बन रहा है, राइट? सो इधर पे यू कैन हैव आप कुछ कर रहे हैं, वो जैसे नहीं कौन सी मूवी थी डॉक्टर स्ट्रेंज वाली, तो एक मल्टीवर्स उधर है, एक मल्टीवर्स उधर है। जस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ AR एंड VR tools and options that you can make use of, right? So for now that's one thing. आपने effects choose कर लिए, I'm just choosing something coming up over here, right? इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? You will want to define कि आपकी जो रील है वो कितने ड्यूरेशन की होगी। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, where did it go? ये 15 सेकंड दिखा रहा है, which basically means कि जो पूरे रील की ड्यूरेशन होगी that will be for 15 seconds. Now you can choose to change it to 30 seconds, to 60 seconds, to 90 seconds. I would say max अगर आपको करना है तो go for 30 seconds, right? For reel. Then what do you want to be the speed of your video? 1x यानी normal, 2x यानी fast forward, 3x ट्रिपल फास्ट फॉरवर्ड, या फिर 0.5x यानी आपने स्लो मो कर दिया, 0.3x एकदम स्लो मोशन कर दिया. That is also possible, right? If I record this right now, 0.3x, तो ये record मैं तो fast कर रहा हूँ. How is it going to be coming up? You will be able to see. Look at that, कितना धीरे 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 मूव कर रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल आपने सब्जी ली, मिक्सर में डाली, वो स्लो मोशन में आ रहा है, और एकदम फास्ट मोशन में करके आपने वो जूस निकाल दिया. I'm just throwing out whatever random ideas that are coming up as well. All you have to do, ये इतने सारे इफेक्ट्स है कि आप बस अपनी क्रिएटिविटी को completely खुला छोड़ सकते हैं in whatever way that you'd want to be doing, right? इसके अलावा then below this you have this timer. For example आपने काउंटडाउन सेट कर दिया कि कुछ पूछना था. प्रिया yes, बोलिए. हाँ जी बोलिए. सर अभी आपने बताया कि आप फास्ट कर रहे थे शूटिंग, मगर वो स्लो दिख रहा था. और अभी आपने बताया कि अगर हम कोई वीडियो बना रहे खाने का, तो जैसे बना रहे वैसे बना के बाद में उसको स्लो करना है कि लाइव में ही उसको स्लो रखना है? लाइव में करें, ये वाले ऑप्शंस को आप लाइव में यूज करें, राइट? लाइव या में फिर आप यूज फास्ट करें. फॉरवर्ड भी कर सकते हैं बाय द वे. फॉर एग्जांपल आपने खाना बनाया और आप रिकॉर्ड करते जा रहे हैं और इट्स टेकिंग टाइम, उसमें आपको 90 सेकंड लग गए, आपने सारे क्लिप्स ले लिए, राइट? फॉर एग्जांपल आपने पहले दिखाया कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं, वो रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने दिखाया कि इसको मैंने कैसे कंपाइल किया, और उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट. तो वो यूजुअली अगर 1x स्पीड पर है तो आप उसे फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ओके, मगर अभी आप लाइव में बता रहे थे ना करना है हाँ जो. मैं लाइव में बता रहा था. सो दैट वुड हैव मीन मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी वीडियो मुझे एक अगर और प्रियांश से एक चीज और पूछना था. जी प्रियांश, यस. हाँ, जो अब इंस्टाग्राम में हम प्लस साइन करके रील करके वो किया ऊपर, उसके बाद आ रहा है अलाउ इंस्टाग्राम टू एसेस योर कैमरा एंड माइक्रोफोन. हाँ जी, वो तो करना पड़ेगा, आप उसको ओके करिए. ओके, यहाँ पर कुछ है नहीं. वो आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन मतलब मोबाइल फोन की एप्लीकेशन सेटिंग्स पे जाके आप जो एक्सेस है वो दे सकते हैं. अच्छा, वो सेटिंग देना पड़ेगा. हाँ जी, हाँ जी, आप सेटिंग्स पे जाके देख लीजिएगा. अच्छा, हमने जो फिल्टर सिलेक्ट किया इसको हम ओके कैसे कर रहे हैं? आई एम सॉरी, ओके कैसे करें? मतलब फॉर एग्जांपल अभी मतलब मैंने ये ये सिलेक्ट किया फिल्टर हुआ है, लिया, ठीक है. राइट? अब ये हम इसी को ही यूज करते हुए पूरा रिकॉर्ड करेंगे एंड वो ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा. सी दैट, right? Let's create a very quick reel as अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये अलग अलग चश्मे में से ये चश्मा सही लग रहा है, and I can try and do a very quick reel.
सबसे पहले तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, इसको टाइमर कर देता चश्मा हूँ अगेन 15 चेंज हो सेकंड। गया ना सर वो? लो ये वापस आ गया। हाँ वो चाहिए। यार वो बिजी था। ऑल राइट, तो ये चश्मा आ गया आपका। एंड उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे ये जो टाइमर वाला ऑप्शन है, काउंटडाउन टाइमर वाला, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अब ये देख रहे हैं आप, ये जो पूरा ये पिंक है, ये इट्स गोइंग कंप्लीटली फॉर 15 सेकेंड्स। नाउ आइडियली व्हाट डू यू वांट टू डू, हमें अगर 15 सेकंड की रील है तो उसमें हम ब्रेक ले लेके करेंगे रिकॉर्ड। 5 सेकंड का पहले करेंगे, फिर 5 सेकंड करेंगे, फिर 5 सेकंड करेंगे, क्योंकि देन इट विल गिव अस अपॉर्चुनिटीज टू ऐड ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स, एडिटिंग। तो सबसे पहले तो काउंटडाउन टाइमर ऊपर 3 सेकंड्स का है, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, दिस इज 3 seconds कमिंग अप ओवर हियर। यानी रिकॉर्डिंग कब शुरू होगी, जैसे ही मैं टैप करूंगा, आई विल हैव 3 seconds टू सेट माई सेल्फ एंड देन स्टार्ट रिकॉर्डिंग। और मैं चाहूंगा कि मैं इनिशियली केवल 5 सेकंड की रिकॉर्डिंग करूं। तो सी इफ आई एम मूविंग दिस डाउन टू 5 seconds, व्हाट विल हैपन एट द 5th सेकंड, जैसे ही 5 सेकंड खत्म होंगे रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। आई विल बी एबल टू रिव्यू इट एंड देन आई कैन से कि अब आगे के 5 सेकंड की रिकॉर्ड करो। ओके, ओके क्लियर हो रहा है? तो अभी मैं सेट टाइमर पे क्लिक कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बी एडिंग वेरी रैंडम थिंग फॉर दिस रील फॉर नाउ। फॉर एग्जांपल, benefits of, can you give me a very quick topic if somebody can? Benefits of a morning walk. I don't know. Which even I do not know because I don't do, but let's see. All right, so that is the main topic, and first 5 seconds what am I going to be talking about? Let's do that. So अभी मैं क्या करूंगा, ये जो नीचे अगर आप देख रहे हैं ये जो शटर है, इसे हम मल्टी शटर कहते हैं। यानी आप मल्टीपल क्लिप्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो आई विल फर्स्ट क्लिक ऑन इट, इट विल गिव मी अ 3 सेकंड टाइमर। लेट्स डू इट। क्या आप अपने लेजी लाइफ से प्रताड़ित हैं और आप चाहते हैं कि आप एक बेहतर जिंदगी पाएं? सी 5 सेकंड्स में वो रिकॉर्ड हो गया, राइट? एंड ऑटोमेटिकली टाइमर स्टॉप। नाउ दिस वाज द फर्स्ट फेज ऑफ माय रील, राइट? इट वाज द फर्स्ट फेज, creating a hook, यानी आपने पेन पॉइंट पे बात कर ली। नेक्स्ट 5 seconds what am I going to be doing? I'll talk about 5 बजे उठिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, something of that sorts, right? So now again I'll go to this countdown timer यहाँ पे, and what I'll do, let's change the filter as well. अब हम यूज करते हैं disco color effect, right? तो हमने पहले वाला फिल्टर यूज किया था with the specs. Now I am adding a disco color effect just for the sake of doing things. एंड यहाँ पर भी हम यहाँ टाइमर लगा देते हैं, काउंट डाउन 3 सेकेंड्स। नाउ बाय डिफॉल्ट इट इज सेइंग कि आपकी 15 सेकंड की रील थी, फर्स्ट 5 सेकंड्स आपने रिकॉर्ड कर दिया और रेस्ट है 5 से 15 सेकंड। बट नहीं, आई विल कीप इट टू 5 से 10 seconds, another 5 seconds, or I can go up to 11 seconds because this is going to be my main body. So set timer. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, मॉर्निंग वॉक पे जाए जा, तंदुरुस्ती बढ़ाए जा, राइट? दैट आई हैव डन। अब ये 6 सेकंड के लिए हो गया। एंड उसके बाद फाइनल जो 3 सेकंड मेरे पास बचते हैं, व्हाट आई वुड वांट टू बी डूइंग फॉर मोर सच टिप्स, फॉलो आवर कम्युनिटी, राइट? यहाँ पर भी लेट्स से विल चेंज द फिल्टर एंड let's go to the timer. अब बचे कितने हमारे पास? 11 seconds to 15 seconds by default. Again, countdown timer 3 seconds, set timer and record. Join our community to become a better version of yourself and become a fitness enthusiast. Done. Right? Now if you'll see, यहाँ पर अब आपके पास edit clips का option आएगा. Right now there is no transitioning happening. There is no moving from one place to another happening. So click on edit clips and see this clip number 1, उसके बाद आपको एक gap दिख रहा है, then automatically clip number 2, then automatically clip number 3. What I can do is here I can choose to, sorry, click on that. ये जो बीच में आ रहा है, if I can expand it as well just to see, click on it and then it will ask choose transition.
ट्रांजिशन यानी एडिटिंग इफेक्ट्स आ गए. So for example, you want zoom in, zoom out हो जाए. ये देखा how that zoom happened over there, right? I want to be doing that. Then in this one, again, यहाँ पे let's see, instead of zoom, what do we have? Blur करना है या फिर ये warp हो जाएगा. See how that transition happened? और spin दे सकते हैं. You have all of these different kinds of options which are going to be coming up. इस तरीके से, right? या एक ऐसा glitch दिखा कर आना है. Let's say I've done that. Now if I look at it, sorry, ये हो गया in terms of our we've added the transitions as well. What is left इसमें just go back very quickly. What we should have done before adding the transitions was also to add music to it, right? अभी हम एक बार music डाल के फिर दोबारा से transitions डालेंगे. So how do we add music to it? On top you will find this music icon. Select that. And now see, यहाँ पर आपको बहुत सारे गाने दिखा रहा होगा, but we'll not randomly select anything over here. We will first click on see more and see that यहाँ पे हर एक म्यूजिक के नीचे how many reels में वो already utilize हो रखा है. For example, पहले वाले में है 1667 reels, then 10,000 reels, 3,451 reels. Now the idea of utilizing trending music is कि आपको reach मिलनी चाहिए, जो म्यूजिक ट्रेंड कर रहा है या करने की कगार पर है. Now there is going to be a lot of music जो कि decent number, जैसे 7,450 reels, which I have played. I'm not sure if you're going to be able to hear it or not. Are you able to? Probably not. हाँ. Right? Yes. So अब ये गाने को आप एक थोड़े से म्यूजिशियन के कानों के तरीके से सुनिए. That this song is being utilized by 7,450 reels. और जब आप इस गाने को सुने तो क्या आपका हेड मूवमेंट हो रहा है? क्या आपको सुनने में मजा आ रहा है? क्या उसमें बीट्स आ रही हैं? अगर उसमें बीट्स आ रही हैं, अगर आपका हेड मूवमेंट हो रहा है, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस गाने को सुन के पेपी फील कर सकते हैं, राइट? अगर मैं ऐसे गाने लेता हूं तो मुझे पता है कि अभी ये 7,400 रील्स पर है, इसका पोटेंशियल है आगे बूस्ट होने का, आगे बढ़ने का, राइट? सो और अगर मैं ये देखूं यहाँ पे, व्हाट डू यू थिंक, ये ब्लास्ट करेगा? डल, right? Similarly, let's see this. What do you think? Should we use? Could be, right? It's still got a ring to it. But the first one that we saw, yeah. So, you know, yeah, Mumtaz ji ka hit ho raha hai, right? So, ऐसा म्यूजिक जो थोड़ा सा बीट्स के साथ हो, थोड़ा सा पेपीनेस के साथ हो, एंड उसमें 7,000 10,000 ऑलरेडी म्यूजिक रील्स में यूटिलाइज हुआ है, यानी ये जो म्यूजिक है ये इसका और चांसेस है कि और बढ़ेंगे, ये और ट्रेंड करेगा. अब जैसे एक और है यहाँ पे बिल्ड इट अप, 50,000 रील्स में ऑलरेडी यूज हुआ है. दिस कैन आल्सो बी यूटिलाइज्ड, राइट? सो that is something that you will have to be looking at. जब आप एक गाना, एक साउंड यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, I'll choose that first one that we had selected, ये वाला. अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? म्यूजिक आ रहा है पूरा. One second. म्यूजिक आ गया पूरा, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो तो गायब हो गया. I don't want to do that. I want कि मेरी वॉइस ओवर भी जाए, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लोगों को सुनाई दे और पीछे से म्यूजिक भी आए. सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, अगेन आई विल क्लिक ऑन दिस म्यूजिक आइकॉन जो ऊपर है, एंड अगर आप देखें यहाँ पे कंट्रोल्स का ऑप्शन आ रहा है राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. क्लिक ऑन दैट. नाउ सी दिस कैमरा ऑडियो बाय डिफॉल्ट 0 पर है, यानी जो भी मैंने बोला वो तो लोगों को सुनाई नहीं देगा. इसको हम कर देते हैं 100 पर. एंड ये जो म्यूजिक हमने स्पेसिफिकली ऐड किया है इसको हम कम ले आते हैं, इसको हम ले जाते हैं, इसकी वॉल्यूम कम ले जाते हैं 40 पर. डन. सर ये कौन सा ऑप्शन बताया था आपने इसको करने के लिए?
ये कंट्रोल्स, जैसे जब आप म्यूजिक सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर कंट्रोल्स का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपके पास आ जाएगा कैमरा ऑडियो एंड यहाँ पे जो म्यूजिक सिलेक्ट किया है। कैमरा ऑडियो पहले 0 पे था, इसको मैंने 100 पे ले गया, और म्यूजिक पहले 100 पे था, इसको मैंने 40 पर ले गया। ओके सर, वन क्वेश्चन, आपने जो ये रील बनाई है जो 5 सेकंड करके बनाई है, उसको आपने ऐड कैसे किया, वो मेरे को क्लियर नहीं हुआ। एक बार दोबारा से देख लेंगे अभी। राइट, लेट मी जस्ट फिनिश दिस वन। अब Also, नाउ sorry, Yash, I just wanted to say, because we're so many people, we remember we're gonna have this video, ना हमारे पास ये recording रहेगी, so we will have to go back उसको बार-बार सुन के we can start creating our stuff too. So that's another thing. now what I want to do, I want कि मेरा जो वॉइस ओवर है जो मैं बोल रहा हूँ, now you would notice that Instagram पे maximum लोग जो reels आती हैं, they always have some kind of subtitles in it, so that it becomes much more easier for people to understand कि आप कह क्या रहे हैं. So here if you see the sticker option which was coming, Kangya, sorry, oh, keep editing, right on top here you have the sticker option, this one, I'll use that. And यहाँ पर can you see the captions coming up over here? Select it. What it will happen, what it will do is वो मेरा voice over सुनेगा और उसके basis पर it will try and create subtitles. अभी वो म्यूजिक इतना लाउड है कि उसको मेरी आवाज नहीं आ रही. लेट मी जस्ट डू दैट वंस अगेन. कंट्रोल्स पे इसको फिलहाल बंद कर देते हैं. Did my voice get recorded? I hope so. Yeah, I think for some reason मेरी आवाज उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाई. Otherwise, what would have happened is जो भी मैं कह रहा हूँ, it would have automatically इसका subtitle ले लेगा. I'll show you that once again in just a bit. But now you have added all of your, आपने edit कर दिया, transitions लगा दिए, right? Music लगा दिया. Everything has been sorted. All you will have to be doing is simply go ahead and upload this reel. If you'll see that, ये आ जाएगा यहाँ पर. You can give it a caption. For example, 5 tips, best benefits of early morning walk, how to do it, blah blah blah. जो भी आपको caption डालना है. Then share to reels, also share to feed by default. Don't need to do anything else over there. Add topics. This is something that you should be doing now. कि ये जो reel है वो किस topic के बारे में है. So you can select up to 3 topics to help match your reel with the viewers. For example, this reel was related to, let's see, yeah, look at that, sports. So home workouts and fitness activities यहाँ पे topic है, मैंने select कर लिया, right? It could be certain more. Let's see if there's any more relevant. I mean, ऐसा नहीं कि आपको randomly कोई सा भी topic select करना चाहिए. You should be looking at topics which are most relevant with your particular reel. If you do not find anything specific, leave it, right? ये हो गया. So that what is going to happen, Instagram की जो algorithm है, that will try and bring me in front of the most relevant people, and then I can simply click on share. So share करूंगा, the reel will get uploaded, right? Now this was one way. Before I move on to the other options as well, any questions? So I see that there was an option for save draft in this case. Yes. So if you don't want to publish it instantly, you can simply save it as draft. Although I would suggest that it's much better to not save them in draft and simply upload them. ठीक है. Okay. Now it's not coming up. प्रयाशिक इसमें आता है boost post का icon आता है, वो what is that? I mean, when we were doing some post also, that was different. उसको आप reel से confuse मत करिए. I think we talked about that. That is more for paid. अगर आपकी कोई content organically reach आ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि मैं Instagram तुम्हें 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और एक्स्ट्रा दे दूंगा और आप और लोगों के सामने पहुंचो. अच्छा. Okay. So sorry, Priyash. So these reels that you're creating here on Instagram is not something that will come in our scheduler. No. That you'll have to be creating by yourself. Either save them as draft
on Instagram. For example, one day, let's say Chetan Sharma he sits down and decides to record 4-5 reels. He records them, saves them in the draft. You do not necessarily need to upload all of them together. Weekly basis पे एक एक draft से उठाई और publish कर दी. Yeah. Okay. Right. And then that we have an option of putting it on our Facebook also. Yes. So I'll do this process once again. One way was I was talking, right? The other could be, simply giving a background image and then a voiceover to it. For example, let's do this and just add certain soothing music to it. See, यहाँ पे अलग-अलग options भी आते हैं. Pop, hip hop, क्या चाहिए? Let's say we do this. Now, when you are using a particular audio, it will also give you on top, see that suggested effect. Instagram खुद बोल रहा है कि आपको कौन सा effect choose करना चाहिए, so that your reel becomes much better looking. So I'll just choose that. इसने तो मेरे होंठ बहुत गुलाबी कर दिए, but no worries. We'll use that suggested effect. क्या क्या करना पड़ता है for Instagram, and then let's say I'll just simply record certain things here and there. Let's take this clip. Can Then we I'll change our background also? our background पीछे वाला, Yeah. yeah, green screen के साथ if you would want. कर सकते हैं. हाँ जी. Then let's say ये second object ले लिया. तो object number 1 मैंने लिया था that water bottle, right? Then I am taking an object number 2, which could be this, let's say specs, right? Let's say object number 3 घड़ी हो गई, right? And let's say ये AC का remote हो गया. तो ऐसे मैंने क्या किया, 4-5 अलग-अलग stills को capture कर लिया, right? Now what I can do, next पे जाते हैं. Now ये सारे objects आ रहे हैं separately. Let's edit them. With every editing option over here, यहाँ पे editing option में you still getting that options for क्या कहते हैं adding transitions. So let's say first यहाँ पे डाल देते हैं that this is the bottle and it should automatically have a transition of, let's say, this thing, right? Then another transition from here. Let's say it will be a warp, and another transition over here, spin. That's it, right? So yeah, if I play it right now, that will become done. Sorry. So I've added transitions. See, एक object, दूसरा object, फिर आपने transitions डाल दिया, फिर कैसे चीजें आ रही हैं. So this could be very good for your, let's say, fitness equipment, या फिर आप recipes दिखा रहे हैं, so you're showing carrot, ingredient number 1, spin to, let's say, celery, ingredient number 2, spin to ingredient number 3 could be ginger, and फिर आपने पूरा जूस बना लिया, ग्लास में निकाल लिया, प्लेटिंग कर दी, बीच में रख दिया, finished product. So 3 ingredients and then the finished product. Make sense? Now what I would want to be doing is कि यहाँ पे पीछे music तो आ रहा है, let's add a voice over to it. So यहाँ पे आप controls की जगह you will find this option called voiceover, and I can just simply hold to record the voiceover. Oh, sorry. Let's do that. Once again. This is all about getting your fitness routine in place. Start now, guys. You are in your best shape. For example, मैंने voice recording कर दी, कुछ भी voice over डाल दिया यहाँ पे. So now what I'll be able to see, if you would be looking at it, again, मेरी voice for some reason is not getting recorded. I think that's a glitch with my phone. Otherwise, वो record हो जाती हैं चीजें. So don't worry about that. Let's see. Controls. Yeah. So anyway, again,
transitions डाल दिए, you added whatever information that you needed, and then you go ahead and simply upload it. All right. इसके अलावा at times what will also happen if I am exploring certain reels, right? अगर मैं Instagram पे खुद reels देख रहा हूँ, for certain people, you might get an option जहाँ पे नीचे लिखा हुआ था use template, right? जैसे for example यहाँ आ रहा है, ये एक reel बनी हुई है और उसके नीचे आ रहा है if you see use audio, so that means this music is already trending and you can utilize this particular audio to create a specific reel. So that's a trending audio from what is already working out on reels और आपने उसको directly select कर लिया. Similarly, you will also be looking at let's suppose for this one, can you see this? यहाँ पे क्या आ रहा है? Use template, right? So if I simply choose template, use template over here, all I'll have to do is यहाँ पे देख रहे हैं 0.6 seconds, 5 seconds. So it is asking me to add media. So I can go ahead, add media from my camera, for example. Let's suppose image number 1, 2, 3, 4, 5, 6, and there could be this. So what will happen? Automatically music sync हो जाएगा. Automatically जो template है उसके basis पे आपने जो images या videos डाली हैं वो sync हो जाएंगे and your reel will be done. So let's see how it comes up. Yeah. See that? If you look at it, let me just do that once again. Make sense? So a lot of ideas can come up from the reel section itself, right? When you're simply scrolling, wherever you find, see यहाँ पर भी आ गया use audio, use audio, फिर आपको दिखा देगा कि उस particular audio के साथ कौन सी reels बनाई गई हैं. So if I use that option, for example this one, हो सकता है यहाँ पर मुझे दिखाया जाए use template या फिर यहाँ effect दिखा रहा है fully HD. This is an effect that I can go ahead and make use of, right? In some cases it will show you use audio, in some cases it will show you use template, right? All of those options can possibly come up. Are we clear? So everything, Instagram has made it very easy for us to now start utilizing from here itself, right? In terms of audio, in terms of templates, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. Right? Let's see if there's another template kind of an option which is coming up. There's a recent update जहाँ पे मुझे reels बनाते समय ही they were giving me, they were showing me templates. Let me see if it's coming up over here. No. Right. Cool, no worries. So for example, अभी कुछ time पहले I added this particular reel. This was based on a template, right? Starting में 3, 2, 1 and then all of the pictures that you might have posted वो एकदम से reel format में आ जा रहा है, right? And this reel specifically, इसका जो music था initially had very less number of reels utilizing, but the music was quite peppy in itself. First 2 weeks 200 views, 300 views. Now look at this, पिछले 3-4 दिन से बस random people who are not following me, people who have no clue who I am, I have no clue who they are, have been liking this particular reel because ये music trend कर गया, right? So इसकी suddenly reach बढ़ गई. So now if I look at my content, see 5,573 plays, of which 246 people have liked it. And if I look at my professional dashboard right now, insights, तो मुझे ये दिखाएगा, if I look at this, last हम कर लेते हैं, let's say 14 days. Last 14 days में accounts reach 4,601 and
primarily look at that, which is the content that has gotten me the maximum amount of reach has been reels themselves. Right? A specific thing about this reel was कि मैंने इसमें जो caption डाला था, that was related to Meghalaya. If you look at that, Meghalaya is not to be missed, and Meghalaya से related hashtags डाल दिए. So now if I look at the insights, इस रील के वजह से मेरे पास मैक्सिमम लोग, इफ यू सी अकाउंट्स रीच की बात करें, दे आर कमिंग फ्रॉम शिलोंग, कैपिटल ऑफ मेघालय, राइट, दीमापुर नॉर्थ ईस्ट, कोहिमा नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज मैंने जो स्पेसिफिक कैप्शंस या हैशटैग्स यूज किए थे, दे हैड हैशटैग मेघालय, हैशटैग नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से, right, which were relevant to this. That's why most of the people who are coming to my profile right now, जो impressions मिल रहे हैं मुझे, they're all specifically coming from the northeast. Are we clear with this? प्रियांश, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जैसे अभी आपने बताया कि आपने हैशटैग यूज किया था, और अभी हम कोई रील बनाते हैं तो उसमें हमें टॉपिक भी ऐड करने हैं, 3 टॉपिक ऐड करने पड़ते हैं। तो वो हमें हमारे रील रिलेटेड डालने हैं कि हमें जो मतलब जिनको हम ढूंढ रहे हैं, जैसे कि हम अगर बिजनेस रिलेटेड ढूंढ रहे हैं या प्रोडक्ट रिलेटेड ढूंढ रहे हैं लोगों को, तो वैसे जाके वहां पे क्लिक करना है कि जो हमारी रील है उसके हिसाब से ही टॉपिक हमें सेलेक्ट So करना है? आपको हमेशा पहले तो सिलेक्ट करना चाहिए अपनी रेलेवेंस को, कि आपका जो टॉपिक किस बारे में है, उससे रिलेटेड हैशटैग्स आपको यूज करने चाहिए। देन सेकेंडली, कहाँ पर आपको पहुंचना है या किस तरीके के लोगों तक आपको पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रेसिपी के बारे में डाला है तो हैशटैग इंस्टेंट रेसिपी, हैशटैग हेल्दी रेसिपी, हैशटैग गुड फूड, राइट, ये उस रेसिपी से रिलेटेड हो गए। Then you will say hashtag fitness enthusiast, hashtag healthy lifestyle, यानी वो लोग जो उस लाइफस्टाइल में इंटरेस्टेड है। Make sense? और टॉपिक में जो हमें 3 टॉपिक सिलेक्ट करने होते हैं, तो They वो should be कैसे करना है? broadly related to what you're putting up. जैसे अगर आप अभी जाएंगे रील्स में और टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, then there will be certain options related to food and fitness, there will be certain options related to business, entrepreneurship, etc. तो हाई लेवल टॉपिक क्या है आपका? इन योर केस इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी रिलेटेड टू फिटनेस, एक्सरसाइजिंग, दोज विल बी द टॉपिक्स, फूड एंड वेलनेस, लाइफस्टाइल, उन टॉपिक्स में से आप शफल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और आपने एक म्यूजिक का बताया, तो सबसे ज्यादा म्यूजिक जिस रील पे हुआ है, मतलब आपने जैसे बता रहे थे कि 2-3 म्यूजिक के अपने एग्जांपल दिए कि ये इतने लोगों ने यूज किया है, इतने लोगों ने यूज किया, तो सबसे ज्यादा म्यूजिक जो चलता है उसी को, वही ट्रेंडी म्यूजिक है? नॉट नेसेसरली, कभी कभार क्या होता है, अगर कोई एक म्यूजिक है जिसको ऑलरेडी 10 लाख लोगों ने, 20 लाख लोगों ने यूज किया है और आप भी उसे यूज कर रहे हैं, राइट, स्पेसिफिकली जब वो म्यूजिक ऑलरेडी पिछले 10-15 दिन से ट्रेंड कर रहा है, फिर आप यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है, आपकी जो कंटेंट है वो कहीं छुप जाती है, बिकॉज पहले से ही उस म्यूजिक पे बहुत सारे लोग हैं, तो आप कहीं ना कहीं छुप जाओगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे म्यूजिक को सिलेक्ट करते हो जो शायद अभी उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन उसमें पोटेंशियल है टू बिकम पॉपुलर, और आप उसे सही समय पे पकड़ रहे हैं, तो फिर आपकी रील का एकदम बूस्ट आ जाता है। जो म्यूजिक मैंने अपनी जो मेघालय वाली रील का एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिखाया, द टाइम व्हेन आई वुड हैव सिलेक्टेड इट, तब उसमें सिर्फ 2,500 रील्स थी जो उसको इस्तेमाल करी थी। अभी अगर आप उस म्यूजिक को सर्च करोगे तो उसमें ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा रील्स बन चुकी हैं, एंड दैट इज वाई, यानी वो म्यूजिक जो है ट्रेंड में आ चुका है। एंड इसीलिए देयर इज अनदर थिंग दैट यू कैन डू, Instagram पर there is something called a creator account, a creator channel. I'll just showcase that to you as well. वहां से आपको बहुत impressions, sorry, बहुत ज्यादा you know वो मिल जाते हैं कि हाँ, कौन सा म्यूजिक ट्रेंड कर रहा है, कौन सी रील के फॉर्मेट्स ट्रेंड कर रहे हैं। I'll just show you that. In fact ये रहा सामने। सो सी दिस, ये इंस्टाग्राम क्रिएटर्स अकाउंट है, ये इंस्टाग्राम ने खुद बनाया है, जहां पर वो हमें टिप्स भी दे रहा है कि अगर आपको इमेजेस डालनी है कैसी डालनी चाहिए, रील्स डालनी है कैसी डालनी चाहिए, कौन सा टेम्पलेट अभी रन कर रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एड म्यूजिक दिस वे टू योर स्टोरी, तो यहाँ पे क्लियरली आपको बता रहा है कि आपने ऐसे इमेजेस, मतलब आप ऐसे शॉर्ट्स ले सकते हो, फिर आप कैसे उसे लिख रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ जस्ट लर्निंग, कि इंस्टाग्राम खुद बोल रहा है कि अगर आप ये चीजें रन करोगे या ये चीजों को यूज करोगे तो बेहतर होगा। अब जैसे आईजी एंथम्स है यहाँ पर, इंस्टाग्राम एंथम्स, तो ये बेसिकली यहाँ पर इनने स्टोरी में डाला हुआ है कि कौन से जो म्यूजिक है वो अभी ट्रेंड कर रहे हैं, राइट। तो
songs to use on your reels and stories. ये खुद recommend कर रहा है, और अगर आप इसको early time पे पकड़ लेते हैं, that would help you to gain a higher reach. Similarly, you will find जैसे reels, right? If you look at that, look at this, ये templates बता रहे हैं that this प्रियांश could, गूगल में जाके रिसर्च करना है। नहीं इंस्टाग्राम पे ही जाके आप सर्च करिए क्रिएटर्स, राइट? सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अ ट्रेंडिंग रील। या फिर आप ये देखिए नवंबर 23 में ये ट्रेंड किया, तो आप इसके तरीके से बनाएंगे, राइट? सो यू विल फाइंड दैट they will themselves give you plenty of ways to create reels which are trending। जो टेम्पलेट्स हैं, यहीं से आपको बहुत ज्यादा आइडियाज मिल सकते हैं। लास्ट वीक दे वर शोइंग कि इंडिया में क्या म्यूजिक या किस तरीके के टेम्पलेट्स ट्रेंड कर रहे हैं। नॉट श्योर भी अगर वो है या नहीं है, बट इस अकाउंट को कोई एक पर्सन, बिकॉज एज अ सोशल मीडिया इंडिविजुअल वी आल्सो हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ ट्रेंड्स। सो समबडी फ्रॉम योर टीम शुड बी लुकिंग एट कि इंस्टाग्राम पे अभी फिलहाल क्या ट्रेंड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, इन टर्म्स ऑफ रील के टेम्पलेट, सो दैट आप प्री प्लान कर लें कि मुझे ये जो रील्स हैं बनानी है, ये टेम्पलेट्स जो है यूज करना है। अब जैसे रील्स वी लव, इसमें आप देखेंगे इट विल शो यू दैट दीज आर the kind of reels जो आप बना सकते हैं, which is getting a lot of traction from Instagram, right? Or different kinds of options. Again, if somebody is creative over here and if you just look at these videos very easily, you will be able to understand कि ये reels जो हैं ये बना कैसे रहे हैं, जो हमें बहुत ज्यादा technical लगते हैं या difficult लगते हैं, editing कैसे हैं, they're absolutely simple and not more than half an hour में you'll be able to create some good looking reels, right? Plenty of knowledge. I would definitely suggest that each one of you who's trying to, अब ये हाँ ये इंडिया का था January 27 reels trend, तो फॉर एग्जाम्पल दिस वाज ट्रेंडिंग इन इंडिया। अब ये जो किया है यहाँ पर, एक कपड़े पहने और सडनली समथिंग एल्स कम्स अप, तो एडिट है, राइट? शी वुड हैव बीन वेयरिंग वन ड्रेस एंड देन चेंज किया, दोबारा से स्टार्ट किया, एंड दिस वाज अ फिल्टर लगा दिए, राइट? और ट्रांजिशंस लगा दिए। देन इफ यू लुक एट सम अदर एग्जांपल्स ओवर हियर एज वेल, दिस इज आल्सो वो जैसे मल्टीपल जो लोग थे उसका उन्होंने फिल्टर का यूज किया हुआ है। People army like. एग्जैक्टली तो सी यहाँ पे क्या लिखा है, सुपर फन कोरियोग्राफी टू यूज, एंड देन उसमें सॉन्ग भी सजेस्ट किया हुआ है, राइट? ऑडियो नेम दैट यू कैन यूटिलाइज। प्रो टिप, ट्राई इट विद अ डांस पार्टनर एंड सिंक योर डांस मूव्स, से ज्यादा आएंगे। लेटेस्ट ट्रेंडिंग ट्रैक्स, इंडिया में घोड़े पे सवार, झूमो जो पठान, ये जो गाने हैं ये ट्रेंड कर रहे थे लास्ट वीक ऑफ जनवरी में, right? So you can be looking at all of this information and try and create very articulate and good looking reels as well. And if you see most of the reels जो यहाँ पे trend करी हैं, they are not very highly edited या बहुत ही सुंदर होंगी, बहुत ही technical होंगी, ऐसा नहीं। Something as simple as this guy coming up and वो जो बोल रहा है वो captions नीचे पे लिखे हुए आ रहे हैं, right? रीमिक्स आइडियाज, आपको किसी और की रील अच्छी लगी, राइट? आपने सिंपली रीमिक्स ऑप्शन पे सिलेक्ट किया एंड देन यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। सो हैव अ लुक एट दिस। यहाँ से ही आई मीन रील्स में इतना ज्यादा एक्सप्लोर करा जा सकता है दैट यू नो व्हाटएवर टाइम दैट वी हैव इज नॉट, in fact एक साल निकल सकता है हमें, but we can keep on discovering new things. So the best way to look at things would be over here. And again, the power of so many people working together is going to be very beneficial for the community, because each one can come up with their own element, as long as you find कि इसमें कहीं ना कहीं entertaining। अब जैसे look at that, this is mental detox के तरीके से है ना, me ignoring negativity going into 2023. What is that? Very simply, just covering her face and walking away, changing the backgrounds, nothing else, not at all technical, right? और बैकग्राउंड में भी उसने ग्रीन स्क्रीन, इंस्टाग्राम ग्रीन स्क्रीन लाइक डॉक्टर शिखा हैज एट द बैकग्राउंड, वहां पे हमने बस ग्रीन स्क्रीन पे कभी इधर से चल लिए कभी उधर से चल लिया और फिर बैकग्राउंड चेंज कर दिया, as simple as that, right? Then look at that, turning your photos into easy reels। अगर आपके पास पिक्चर्स हैं, how can you convert those particular pictures into reels? You'll get an option over here। आपके पास बहुत सारे फोटो डंप हैं,
and sync them to a song, add a behind the scenes moment, and very simply you will be able to create. So to get a lot of reels ideas, come up on creators. This will be really very helpful for you. Is that okay? इसमें follow का option आ रहा है, then we can follow it. Yeah, following. absolutely. Please do that. Please do that. All right. और प्रियांश, हम जब रील डालते हैं तो उसमें हैशटैग डालना जरूरी है? हाँ, हैशटैग डालना जरूरी है आपके लिए, एंड दैट शुड बी गुड फॉर यू एज वेल. रील्स में अगर आप 6 से 7 हैशटैग्स डालें, गुड इनफ, राइट? बट दे शुड ऑल बी वेरी मच रेलिवेंट टू योर पर्टिकुलर टॉपिक, एंड दे शुड बी मीडियम पॉपुलैरिटी आप कह लीजिए. इंस्टाग्राम खुद ही आपको सजेस्ट करता है. अदरवाइज what we do, for example, let me very quickly show you very basic tool, besthashtags.com, right? यहाँ पर if you are talking about, let's say, health, you आपने एक वीडियो क्रिएट किया है for healthy lifestyle, for example, it will give you the most popular hashtags, most popular and relevant. Look at that: healthy lifestyle, healthy food, fitness, health, healthy living, fitness, motivation, etc. आप कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए. Because these hashtags are the most relevant for your particular topic, for your particular niche, and they would be decently, इनसे आपको reach भी मिलेगी. All you need to do is go on to besthashtags.com. I think some of you guys would already know, अगर आप Instagram पे काफी ज्यादा एक्टिव हो, नहीं हो, कोई भी पोस्ट बना रहे हो, simply, and I would suggest कि जैसे आपके पास अलग अलग content baskets हैं, right? If it, let's say Monday we are only talking about exercise, आप हमेशा एक्सरसाइज से रिलेटेड के जो हैशटैग्स हैं, सेट्स हैं, उनको अलग बना के रख लीजिए. लाइफस्टाइल अलग से सेट्स ऑफ हैशटैग्स बना के रख लीजिए, so that you don't need to every time research new hashtags, and you can very simply go ahead and upload them. Okay? So आप कह रहे हो प्रयास की जो हैशटैग है, इस वेबसाइट से जाके बेस्ड ऑन आवर कंटेंट वी नीड टू क्रिएट द काइंड ऑफ रिपोजिटरी की किस टाइप में हैशटैग्स की इन्वेंटरी बना के रख लें. तो मैं वहां से, लेट्स से मैंने बोला मंडे मॉर्निंग, मंडे मोटिवेशनल, तो मोटिवेशनल मैं besthashtag.com से जाके निकालूं एंड कीप इट. जब भी मैं मोटिवेशन की पोस्ट करूंगा तो सारे हैशटैग में वो कॉपी पेस्ट करके लगा दूंगा, तो मेरी रीचेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट? बिल्कुल. और एक चीज और है, कैप्शन की बात होती है. कैप्शन को हाउ डू अंडरस्टैंड? आई मीन, so caption is nothing but a very simple way of explaining what your content is all about, right? तो अगर आपने इमेज डाला हुआ है which is visually very alluring, उसके पीछे का जो thought process है, आप उसको explain कर दें. And I would suggest ChatGPT का use करिए. That's the best place to go ahead and, let's say, for example, write a caption for a fitness post on Instagram. बहुत beautiful caption आपके पास आ जाएगा which will be explaining about that particular post, and it will go out on your Instagram. So caption का main purpose होता है that आपकी image किसी ने देख ली, content देख लिया, बड़ा प्रभावित हो गया, and then he would want to know more. तो caption के अंदर you should be putting up your thought process कि ये जो मैंने content डाला है, क्यों डाला है, इससे आपकी क्या मदद हो सकती है, और हमेशा call to action रखना उसमें जरूरी है, like follow us or message us for more information or comment below to get more information. That is very important in your captions. Are you good? So means gist of my post, right? Exactly. One more question, please. Yeah. अभी जो हैशटैग की बात हो रही है, जैसे सपोज हमने एक्सरसाइज के लिए एक बंडल बना लिया, तो हम हर बार जब भी एक्सरसाइज से रिलेटेड पोस्ट कर रहे हैं सेम यूज करें, या उसमें जैसे कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, कोई पर्टिकुलर योगासन है, उसके बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग चेंज कर दें? Exactly, you can make use of that as well. आप बेनिफिट के अकॉर्डिंग या स्लाइड चेंजेस कर ले, बट एटलीस्ट आपके जो कोर हैशटैग्स रहेंगे वो हमेशा सेम रहेंगे. एंड हर एक पोस्ट में हैशटैग THT या फिर हैशटैग द हेल्दी ट्राइब, आपके ब्रांड का हैशटैग हमेशा यूज करना है, राइट? बिकॉज फॉर फर्स्ट 6 months 1 year probably उससे आपको ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जब once you will become popular, people will search hashtag THT से related content and they can directly come to your place, and उस hashtag पे किसी और का भी अधिकार नहीं होगा in terms of your competitor. That will become your own property. Yes. या मेरा एक, जैसे आपने वीडियो में भी ऑडियो ऐड करने का बताया था ना ट्रेंड्स के लिए,
तो एक तो मैं काउंट से देखूंगा कि किसका ज्यादा काउंट है, लेकिन अभी क्या है कि आपने एक एग्जांपल दिया कि काउंट ज्यादा हो, वो भी जरूरी नहीं। तो क्या मुझे सुन के देखना है? बट सुनूंगा तो बहुत सारे, कितने सुनूंगा मैं? तो हाउ डू आई फिल्टर थोड़ी दैट? मेहनत तो करनी पड़ेगी उसमें। नहीं नहीं, दैट आई एनीथिंग कैन डू। बियॉन्ड 4000, नहीं नहीं मतलब नहीं, आप 2,500 से मेरा 4,000 मेरा वाला। क्वेश्चन सुन लीजिए। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला कि 8,000 की लाइक जिस पे रील में यूज हुआ है, तो मैंने उसको देखा कि ठीक है नंबर ज्यादा है, उसको पिक कर लिया। बट सब्सिक्वेंटली अदर वे राउंड भी है। तो मैं या तो वो मैक्सिमम काउंट वालों को देखूं और सुनूं, उसके बाद में से जो मुझे सूदिंग करे वो मैं अप्लाई करूं, बिकॉज इट अगेन माई इंटेलेक्ट कि मैं कुछ ठीक लग, बट जरूरी नहीं वो सबको अच्छा लगे। तो मैं तो एल्गोरिथम से जाऊंगा कि सबको क्या अच्छा लग रहा है, आई वुड लाइक टू चूज दैट, बिकॉज मुझे रीच बढ़ानी है अपनी। तो मेरा वो बैलेंस अप्रोच क्या होना चाहिए? तो फिर उससे बेहतर अप्रोच ये रहेगा कि आप पहले तो जो नॉर्मल लोग रील्स डाल रहे हैं, जो आपको रील्स दिखती हैं, वहां पर आप एक्सप्लोर करिए। वहां देखिए कौन से ऑडियोज या सॉन्ग्स आपको बार बार सुनाई दे रहे हैं। जो आपको कैची लगता है, आप यूज ऑडियो पे क्लिक करिए और उस ऑडियो को इस्तेमाल कर लीजिए। व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग कि अच्छा ये जो पर्टिकुलर ऑडियो है, ये जो पर्टिकुलर म्यूजिक है, ये कई बार इस्तेमाल हो गया, मैं पिछले 15 मिनट से रील देख रहा हूँ लेकिन 10 से 15 रील्स में मुझे ये ऑडियो समझ में आ गया, तो डेफिनेटली ट्रेंडिंग में है। या फिर कुछ कैची म्यूजिक आपको लग गया वाइल यूर वॉचिंग द रील, जिसमें एक अच्छा टेम्पलेट भी बन रहा है, उसको आप यूज कर लीजिए। राइट। क्या मैं क्रिएटर ऑप्शन से जाके सर्च करूं? क्रिएटर ऑप्शन में तो आपको हमेशा दिखाई देगा। जैसे अभी इंडिया में अभी आप ट्राई करें घोड़े पे सवार जो गाना है उसका, अगर आप यूज करें तो समथिंग विल ट्रेंड अप वेरी क्विकली। अंडरस्टूड, थैंक यू। ठीक। मेरा एक क्वेश्चन और था। वन बाय वन प्लीज। या शिखा मैम। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन था जैसे रील्स के लिए हम जो रहता है कि भाई अपनी टारगेटेड ऑडियंस देखिए कि इस समय सब लोग एक्टिव हैं तो उसी टाइम पर पोस्ट कीजिए, नहीं, अदरवाइज उसी वो टाइम पे नहीं, नहीं उससे करना है। आधे ओके, घंटे पहले। उससे आधे घंटे पहले करना हाँ। चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो मोस्ट एक्टिव टाइम पर आ रहे हैं, राइट, तो ऑलरेडी वो ना, दे विल फर्स्ट गो एंड लुक एट अदर कंटेंट, दे विल ऑलरेडी बी इनंडेटेड बाय इंस्टाग्राम एल्गोरिदम विद डिफरेंट कंटेंट जो कि उनका ज्यादा अटेंशन ले सकता है। और अगर आप जब वो लाइव आ रहे हैं, जब वो एक्टिव हुए और तब आपने रील शेड्यूल करी, अपलोड करी, तो आपकी रील को अपलोड होने में, फिर सामने आने में लोगों को टाइम लगेगा, 45 मिनट्स निकल गया। तब तक वो गए। लेकिन अगर आप उनके आने से आधे घंटे पहले ही अपनी रील डाल देते हैं या अपना कंटेंट डाल देते हैं उनके एक्टिव होने से आधे घंटे पहले, तो आपका कंटेंट ऑलरेडी एल्गोरिदम में आ गया है, उसको ऑलरेडी पुश होना मिल जाएगा। तो जब ये बंदा आधे घंटे बाद लॉग इन करेगा तो चांसेस ज्यादा हैं कि उसको आपका कंटेंट सामने दिखे, एज अपोज टू बाकी लोगों के, फिर आप ढूंढते ढूंढते आपके कंटेंट पे आए। इसलिए कोशिश यही करिए कि हमेशा अगर एक्टिव टाइम रात के 8 बजे बता रहा है तो आप 7:45 शेड्यूल करिए, 7:30 बजे शेड्यूल करिए। सेकंड क्वेश्चन के हम कंटेंट को लाइन में लगा दो। हाँ जी, एग्जैक्टली। सेकंड क्वेश्चन था कि हम ट्रेंडी म्यूजिक जैसे है कि अभी हमने ये सुना तो हमें ये लगा कि ये म्यूजिक बहुत ज्यादा चल रहा है, हमने उसी पे रील बना दिया अपना। दूसरा भी आपने बताया कि आपने वो म्यूजिक चूज किया जो आपको लगा कि नहीं आ सकता है ये फ्यूचर में, तो क्या वहां पर भी फिर रीच बढ़ता है? एब्सोल्युटली, मतलब जैसे ओवर अ वो पीरियड ऑफ रील टाइम, में। ओके, राइट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रील आपकी, वो रीच बढ़ती ही बढ़ती है आपकी, एंड इट बिकम्स मच मोर ईजियर एज वेल। जब भी वो म्यूजिक कभी ट्रेंड में आएगा तो वो रील अपने आप ही, वो अपने आप ही बूस्ट कर देगा उस पोस्ट हाँ को। जी, हाँ जी। थैंक यू। ऑलराइट। प्रियांश, मुझे आपसे एक पूछना था। प्लीज गो अहेड। हम जब रील बनाते हैं तो ऐसा मैंने देखा हुआ है कि पहले वो बोलते हैं, अपना मैसेज छोड़ते हैं, उसके बाद म्यूजिक म्यूजिक लगाते हैं, तो वो कैसे करते हैं? आप एडिट पे जाएंगे ना, जब आपकी एडिट क्लिप्स का ऑप्शन आता है, तो अगर आप वहां देखेंगे तो आपने फर्स्ट 5 सेकंड में आपने केवल बोला, और उसके बाद नीचे वो ऊपर आपके क्लिप्स दिखाई रहे होते हैं और नीचे वो ऐड म्यूजिक का ऑप्शन आता है। तो अगर आप ऐड म्यूजिक पे क्लिक करते हैं तो फिर आप सेट कर सकते हैं कि भैया ये म्यूजिक यहीं से शुरू हो या ये म्यूजिक यहाँ पे जाके खत्म हो। वो आपको वही एडिटिंग, इंस्टाग्राम के इनबिल्ट एडिटिंग ऑप्शन पे ही मिल जाएगा। ओके। और अभी अभी जैसे कि मैंने मतलब मैंने देखा भी है, सुना भी है, बहुत सारे रील में हैशटैग कोई यूज नहीं कर रहा है, तो
मतलब जरूरी है कि नहीं है? नहीं, वही मैंने कहा 4 से 5 हैशटैग यूज करिए जो कि हाईली रेलेवेंट हो आपके रील से। फालतू में बहुत सारे हैशटैग्स भरने का कोई फायदा नहीं है। हैशटैग्स को ये समझे कि वो बेसिकली कीवर्ड्स की तरीके से काम करते हैं, कि अगर कोई सर्च कर रहा है इंस्टाग्राम पे तो वो हैशटैग सर्च करता है, कंटेंट डिस्कवर होता है। तो जो पहले एक थॉट प्रोसेस होता था कि आपने भर भर के हैशटैग्स डाल दिए रील्स पर स्पेसिफिकली, वो नहीं करना चाहिए। हालांकि जो हमारे नॉर्मल पोस्ट होते हैं वहां पे 15, अगर हम इनिशियली स्टार्ट ले रहे हैं, नया अकाउंट है, तो हमें फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करना चाहिए। 15 से 20 हैशटैग्स जो मेरे टॉपिक के लिए रेलेवेंट हो, जैसे बेस्ट हैशटैग्स में आपको पूरा सेट मिल जाता है, वो सेट आप यूज करते रहिए। अगर अगर हमारे अकाउंट में हमें लोगों की रीच ज्यादा चाहिए तो हमारे रील्स पे हैशटैग जरूरी है इनफैक्ट। हाँ, हाँ, किसी भी कंटेंट पे आपके हैशटैग जरूरी है अगर आपको अपने अकाउंट पे ज्यादा रीच चाहिए। बट ये अगर नहीं हम होना फोटो चाहिए कि आपने स्टफ नहीं करना है हमें 30-40, मतलब एनी विच वेज मैक्सिमम लिमिट 30 की होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने 30 हैशटैग्स डाल दिए। आप रेलेवेंट और सही टॉपिक से जो जुड़े हुए हैशटैग्स हैं उनको यूज करिए। ओके, So Priyansh, I have a question related to yes. the asset protection. This happened with me. That's the reason I'm asking. So let's say we have a name of this, which is THD. And tomorrow, if my competition comes up, I want to use that name. I want to set up a page which is THD Global. I want to encash the THD brand, which is already very popular. So do we have anything to protect this? Anything to, I mean, I think the first and foremost that you'll have to do is get a trademark, like a proper government trademark for it, right? Or even apply for it, which is a 6 months long process, cost you about $6,000, right? And it takes 6 months to actually get the written trademark for yourself, but at least you can show that you've applied for it. That is first thing. Then if you start looking at somebody else is utilizing it, you can report it to Instagram that this guy has been utilizing it. If that guy already has a trademark for it, which is a high possibility ki nahi hoga because you have it already, then they will have to change it, right? Or you can contest on Instagram itself. The second thing is that, over a period of time, जब आपके पास काफी सारे followers आ जाते हैं, you have a legal entity and you have a lot of engagement, you have a trademark, you can apply for that blue tick verification so that it showcases that you are the only one with this name, nobody else can utilize it. But that is also going to happen once you've grown, and you have to physically go to Instagram and apply for it by furnishing certain documents and showcasing your engagement. Right. So I got your point. Trademark is one way to go. Another one is the blue tick verification, which probably is going to come to picture when I'm very big enough to really call myself a public figure or a company. Right. The other one that you mentioned is contest. How to go? So contest would mean that basically you'll have to reach out to Instagram itself as a help center, in the help center, that this is a document that proves that I have the trademark of this particular entity and this other account is utilizing it. So Instagram will start a dialogue between the two of you, and if they really find it that they're violating any kind of IP laws, or they've violated the copyright, they're going to be banning that particular account. They'll not be able to get access to their community any longer. And that's also very important to understand कि किसी और का content भी कभी भी चुरा के या फिर directly copy paste नहीं करना है हमारे Instagram account में, because I've had a particular known, these guys had 5 lakh followers, उनके intern ने इधर उधर से कोई content ले लिया without giving credits, and their entire 5 lakh community वाला जो account है got banned. And imagine the amount of pains that these guys would have gone through, because their whole business model was based on that community. Got it. So yeah, we will reach there. So that's the reason I asked, because I faced a similar problem with my account. Somebody really tried to encash by putting in official, ABC official. That is, you can always contest with Instagram on that. Yeah, got it. Thank you very much. Cool. So I hope you guys have had the chance to reflect on today's session as well. And I think that completes most of our content creation journey, learning of content creation journey. It's now up to you guys to capitalize on it and start creating things, है ना? So I hope next week तक आपके Instagram account पे हमें और भी चीजें मिलेंगे, and I'll also
have a quick look at whatever content that you've been posting, so that I can also come back with good feedback कि क्या सही हो रहा है या नहीं हो Can रहा. we do that now, just a little bit, Yeah, because we don't sure. have a lot. Just ताकि फिर हम next week के लिए it's better and then we schedule. Can you let me in on my phone, or you can just go to the Healthy I can Tribals? just the Healthy Tribals. I'll just Because go there. there's some other things also that I want to show you. All right. So this is what we've put up so far, right? So this one, I'll go with this one first. This is just the text is coming very heavy from a visual perspective. That was my creation. Right. So Rest you've tried. It just needs a little bit of more finesse. That's it. Right. In terms of just looking a bit more visual appealing. This looks good. Go ahead and nap. Sleep is skincare too. Hashtag the Tribals. That's nice. Again, this one, ye jo did you know wala hai na, with so much of text over here, we would rather want ki just, for example, did you know rose petal salad can brighten up your plate? Just like that. For example, one particular line. Did you know this? The fact. And if they want to know more about it, they'll read the caption. Make sense? 5 steps to a healthy lifestyle. That looks good. Yeah, so carousals के लिए this is looking much visually appealing. If possible, ये जो images हमने directly ऐसे डाली हुई ना, इनके around कोई border हो जाए, and if they're all of the same size, like for example, look at this, ये अलग size है, this is bleeding out over here, right? This is different size, and the third one was also different size. If they can all be of the same size, now see, so the visual appeal should be consistent. Try using images if at all should be fitting it in the same size of the box. Yeah, I think that's what we have to. We use the same template now for every page. Yeah. This is Manoj sir, I guess. Right. So इसमें हम कुछ बोल रहे हैं क्या? Yeah. This is good. If only, we're spending a lot of time on showcasing the jumping. So very quick shot of jumping and moving on to the tips, because I am waiting for the benefits. I'm waiting for either somebody So they to can speak or make look some at. fast forward. I mean, quick chat, having Yeah, some you just timing need and like also 2 seconds for exactly, it. exactly. And you Right. see, I had made this one. Can you check that? It's time for change, because that I tried through Canva, and then I did a voiceover. So I want to know if that's something we can do. You've added a voiceover to it as well. Yeah. Are you not able to? We can't hear it. I can't hear it, but I think you can normally hear it. So I utilized the voiceover. I made the thing on Canva, but I utilized the voiceover on Lumenfy Instagram on itself. Instagram. This is nice. This has come up very nicely. So this is this a reel? This is a reel. No, I think you've just Or one video. second. Where is It's a it? reel. You've added it as a video. It's gone up as a video. No, it's gone up as a reel as well. Yeah, both of them have gone up as a reel. And if you see 267 reaches 123. This is good. And for reels, I mean, each one of you can have their own sort of set of positioning. Like you can So what go is with this this 267 and all, Prayash? views, कितने impressions हो चुके हैं, कितने views हो चुके हैं उस particular reel के, right? इसके 123, इसके 267. See that although you have only 133 followers, 267, yani it has gone above and beyond your existing followers as well. More views than the followers. Exactly. So last night I tried, because I didn't know, I tried the poll option.
So वो मैंने अपने personal account पे किया क्योंकि I didn't want to spoil this in case it didn't go good. So that would be a story then. Well, Yeah. it is a story. Add it Polls into come a in story. stories because it's not something you want continuous. Can you take a look at that also? It's Where just is my it? name, Lavleen, Lavlen. So then we can use that for LAVLEEN. Okay. LENRIAR. RIAR. This one? And yeah, so if you go to my stories, it should come up. But that's in stories. ये तो मैंने promote किया था आपने. Yeah, see, so we can do something like this. Yeah. I just wanted to. That's good. So if you Oh, vote, by the way, the regular posts also that you're adding, they're having high visual quality, right? You can make use of such things as well onto your main community page. Yeah, definitely. This was my trial. This is long ago. I mean, Right. I haven't really been active on my page, but these were just trials when I just started first. So yeah, okay. Cool. So we'll do that. Because I feel that when we use like our own pictures, it's so much better than using, you know, what's on the media already, which everyone's using. Yeah, absolutely. So in the last 5-6 months, when I decided to do that, because I'm doing a lot of fruit, so I've started taking pictures of that. So that I'll be using in our content. Perfect. So keep on doing that. Put up as much real images as possible, as much real videos as possible. Yeah, definitely. And the other question is just you showed us all the reels. So now let's say like honey mixer recipes and that. So we can take pictures. Rakesh ji has done lots of things like that. So we take photographs or videos and then we combine it like you had picked from your camera. Okay. Yeah. And then we just adjust कौन सा पहले जाएगा कौन सा बाद में जाएगा कितना time उसमें दिखाना है. Do you want to add any transitions to it? Right. Yeah. Rakesh ji, you had something to share. You had made something. Because I'm not. आपके पास वो वीडियो है ना जो मैं just want to ask Priyansh ji. Hello Priyansh. कि how it is going. Like अगर हम उसको थोड़ा change करना है. Can you let है. me in by my phone? I'm just in the waiting room. Then I can just show it. It's showing nobody is in the waiting room. No, that's me now. I'm there. Oh, okay. So I think you may have to give me the rights. Yeah, it's by which name? Sorry. Lavleen. I'll hand raise through that. Then you'll know. Yeah. Got it. Rakesh ji, you shared with me personally or on that group, I think. I've added. Giving you the host access. Okay, let me just quickly find that. Sure. I think Tuesday उसमें मतलब भी है हमारा. मैं करती हूँ भी. Yeah, just quickly so we can. So while I'm doing this week our goal is to get schedule everything. We have to have enough content to schedule it. Yep. Yeah, got you. Okay. Put up as much. I mean everything. Now right. You know reels as well. As we can. Yeah. Schedule, and it would be good for me to see the entire thing planned up in the scheduler or the planner. That would be really nice. We can show that next week. I'm not sure which. Oh, it's on this. Why is Wednesday? कहाँ पर है राजेश जी जल्दी से बताएं मुझे कौन से आपके दीदी उसमें ट्यूसडे जो है हमारा थॉटफुल ट्यूसडे में भी है थॉटफुल ट्यूसडे उसमें इजी रहेगा आपको ढूंढना. Good morning, happy Tuesday. Not coming. प्रयास मैंने राकेश जी ने Give nature to your body. I'm not able to see. प्रयास राकेश जी ने एक वीडियो दिया था जिसको हम लोगों ने पोस्ट किया था स्टोरी में, बट वो हट जाता है क्या? हाँ, स्टोरी में 24 आवर्स के बाद हट जाएगा. स्टोरी इज ओनली फॉर 24 आवर्स. तो उसको हम पोस्ट में भी डाल सकते हैं, स्टोरी हाइलाइट्स में डाल सकते हैं आप. हाइलाइट्स में यूज कर लीजिएगा. तो फिर वो रहेगा हमेशा? हाँ जी. अच्छा, इतना अच्छा था तो हट गया, दोबारा से करना होगा.
I think when we share a story, we have an option to save it or something. There's Save it as a highlight, add it to a highlight. So Yeah. I would talk about that in the upcoming session, because you can very quickly create highlights related to recipes, fitness routines, exercises. So all of the stories that you're uploading in the highlights, if it is pertaining to exercises, they will get saved in an exercise highlight. जैसे अभी हम देख नहीं रहे थे creator account में live Q&A, trending reels, live music, they're all highlights. So they're all the stories that they would have put up years and years ago, but they're still saved in it. So somebody can simply go and see किस तरीके का content इन्होंने post किया है पहले. Okay, so but then now when we do polls and stuff, obviously that's not something you want to go on. So that's in a story, but Yeah. then people have responded. Like Exactly. they say somebody has said no, somebody said mouth. So then we can respond to them. Respond to them, and you can also find out किसने क्या जवाब दिया है, so you can even message them कि But then it won't stay. It won't stay beyond the 24 hours, or will we still have access to it? you will have the access to who has engaged with that story. The story will disappear from your there, but Yes. you'll still be able to have the access. Lovely, When ma'am. we go to our account, we still have that. Yeah. Okay. In the form of engagements, you'll be able to Lovely, see. ma'am. Yeah. We have that Rakesh ji wala in this online community में WhatsApp के group में है ना? Yeah, but it wasn't playing. It was showing my screen, but it wasn't playing for some This reason. one. I can share with. I understand. I put it. It even You can said do my one thing, screen maybe is you can sharing. share it with Hitaishi. Maybe she can Yeah, just we'll upload do it that. on the group or on the drive, and we can have a look at that. Yes, you can share it with me. Also, if you can check out the ASMR video, I wanted to know because I need to edit it. Should we, increase the volume, or if I should just edit it like a reel or put a music in the background? Have you sent it on the group, the WhatsApp group? No, Put it's it not on the community I'll group. upload it in the group now. Online community. Sure. So if you can send it to me, I will also see it, and then I will forward it to Priyash also to have a look at it. Cool. All right. Yeah. ठीक है then. So I think there's enough food for thought for this week as well. And as we mentioned at the beginning, that it's exactly the right time to get things started and get the ball rolling. So that we've already seen 133 followers. Next week तक इसको आप 500 ले जाओ. Let's hope. Reels बनाएंगे तो हो जाएंगे. I guess. Exactly. Yes. Because there's so many creators, they'll definitely be able to do wonders with it. All right, thank you so much, guys. I'll see you next Lovely. Wednesday. Priyansh Yes. and lovely ma'am, for both. lovely ma'am, ये बताएं जो भी पोस्ट आपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑनलाइन कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल रहे हैं, क्या इस पोस्ट को हम अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं? I shared. आप शेयर कर सकते हो, जैसे अभी प्रियाश ने मेरा अकाउंट खोला था, तो I have shared the TXT on mine, ताकि उसकी और right? That's what we do. Exactly. Yeah. You can share the take that post. text and make it your own, but you share it. Okay. मैम मतलब अपने फ्रेंड्स या डाउनलाइन को शेयर कर सकते हैं ना? और अपने पेज पे भी आप शेयर कर सकते हो. अपने पेज पर कर सकते हैं? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, इंस्टाग्राम का जैसे अपना पेज है उस पर हम वो पोस्ट कर सकते हैं? As a share, yes. मैम स्टोरी पे डाल सकते हैं उसको हम? Absolutely, and you should. अगर आप तो अपनी अच्छा, एक क्वेश्चन प्रियांश ये था कि जैसे कि मैं उस पर डालूंगा, ऑलरेडी कम्युनिटी पेज के जो इंस्टाग्राम वहां पर ऑलरेडी फेसबुक पर होगा, तो ये डुप्लीकेशन नहीं हो जाएगी कि हमारे पर्सनल पर? आप उसको कॉपी पेस्ट करके नहीं डालेंगे, आप उसको रीशेयर करेंगे. जैसे रीशेयर करते हैं ना, तो लोग आपके प्रोफाइल पे सबको पता रहेगा कि ये THT का पोस्ट है, आपका नहीं है. आपने THT के पोस्ट को लोगों के सामने लाने की कोशिश करी. और वैसे भी लोगो रहता है ना हमारा THT का, तो आप उसका विदाउट लोगो विदाउट ऐसे नहीं डालेंगे. आप THT पे पहले कंटेंट डलेगा, वहां से आपके पास ऑप्शन आएगा शेयर, तो आप अपने प्रोफाइल पे फिर इसको शेयर करेंगे. अच्छा, वो लिंक डायरेक्ट डाल सकते हैं, हमने शेयर करना है, डायरेक्ट नहीं डाल सकते, शेयर एग्जैक्टली शेयर करना है. तो प्रयास, अभी आपने एक चीज बताया था, शायद हिताशी ने बोला था कि हमारे जो वैसे तो वी आर यूजिंग द सेम टेम्पलेट जो हमारे बने हुए फिक्स्ड एंड फ्रीज टेम्पलेट. तो आई थिंक किसी ने बोला था कि कई बार थोड़ा सा ल्यूक्रेटिविटी लाने के लिए हमें कुछ अलग सा भी करना है काइंड ऑफ.
तो वो कैसे करना है? डू वी यूज बिकॉज हमारा थीम इज समथिंग ग्रीन एंड व्हाइट, आई मीन द वे वी आर नहीं वो क्रिएटिंग। आई थिंक दैट वाज मोर फ्रॉम अ वीडियोस पर्सपेक्टिव, कि जो भी आप वीडियोस या रील्स क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप अपनी अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी ले आइए, दैट वुड बी परफेक्टली फाइन। बाकी तो हमारा जो जो थंबनेल है नॉर्मल चल रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है। तो आप जो भी जैसे the ASMR video also I've got from Sejal. So basically, I'm just going through it. So the thing is, we can also that particular video can also be embedded in the template, the THT Exactly. template, so that the entire look and feel of the page looks the same. But then there is a variety of content. I think we'll have to once physically show how do we embed it, probably Yeah. later on वैसे maybe कैनवा पे हो जाएगा हाँ, आसानी से, आप बहुत वो easily. वीडियो को आप अपलोड कर लीजिए कैनवा पे, और फिर जहाँ पे आप अपना टेम्पलेट बनाए हुए हैं वीडियो का उसमें पेस्ट कर दीजिए उसमें बस. वहाँ पे उसे अपलोड कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए। So it जैसे can be आप done. फोटो को एडिट करते हैं टेम्पलेट में, सिमिलरली वीडियो भी एम्बेड हो जाती है. अंडरस्टूड। बट आप जब भी ऑडियो यूज कर रहे हैं रील के अंदर या सो इट्स बेस्ट टू यूज what Instagram is showing, like from that section, not on Canva, because उसकी जो वो Instagram then as per algorithm it reaches more people if it's trending, like how Priyash said. अच्छा प्रयास, जैसे मैंने जो अपना वीडियो डाला था तो उसमें ना बैकग्राउंड साउंड आ रहा है जंपिंग करने का, अभी मतलब आपने उसको देख लिया, हटाना। इफ यू सॉ दैट वो ऑडियो वाला ऑप्शन था, तो आप उसमें कैमरा ऑडियो को नीचे कर दीजिए कंप्लीटली और सेटिंग्स में नया जाके। मैं कोई अलग सी म्यूजिक ऐड करना चाहूँ, आई कैन एनहांस बस दैट। एब्सोल्युटली। और उसको छोटा कर सकते हैं, जैसे कई बार उसका ना आई ट्राइड कि मैं थोड़ा कट कर दूं, बहुत लॉन्ग जा रहा था, वो तो भी आपको पहले तो अगर मैंने उसकी स्पीड बढ़ाई। इंस्टाग्राम पर ही आप एडिट कर पाएंगे, वो कट वाला ऑप्शन आएगा, नहीं तो आप कैनवा पे उसको अगर आप अपलोड करके डाल रहे हैं तो वहां से भी आप एडिट कर सकते हैं। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा सर। So Priyanshi, एक और question है, probably we need to take a call as a group together. I mean, just to keep it simple. मैं अपने पेज पे I am trying to finalize a format. तो जब हम लोग इसको format बना रहे थे, तो let's say positive thoughts, testimonies, and let's say feedback, client feedback. तो इन तीन के हमने format बना लिए. But as far as जब हम videos या reels डालते हैं, उसको format में लाना it is becoming थोड़ा मुश्किल सा काम है, जैसे embedding की बात कर रहे थे आप। So and simultaneously मैंने बहुत सारे pages पे जाके देखा, people are not following any template for reels and videos. So They're that was putting just it one as it is. option, Ashish, that you can do that if you'd want to be maintaining a visual consistency. But I would suggest that reels को let it be going native. Free flow, yeah. Free flow. जितना free flow रहेगा for your reels, that's better. But as they were asking, if you want to do it, you still have the option कि आप Canva पे जाके उसे embed कर सकते हैं. But suggestion is let it free flow. For Be example, creative. मनोज ने जो उनका वीडियो डाला, so उसमें 30-40% of the space has been taken by frame. Taken by the frame. अगर Exactly. वो And बड़ा if it होता would तो मुझे directly लगता था अगर और ऐसे better जाता ना, लगता। हाँ, वो one better thing could have been, it would have just posted as reel, और वो jump कर रहे हैं और वो 5 tips अपने आप ही सामने आते जा रहे हैं. Right. That could So have also been done. पूरा frame would have made more sense. It's probably a personal thing, but मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए आसान हो जाएगा बनाना. Absolutely. And not everybody has to really take a frame over there and put it. उस तो मतलब that's a call, maybe Lavleen ji, आप अगर हम we can take No, it that makes collectively. sense. That makes sense. For our posts, for our carousels, we can use, and for reels or some of them, I don't know, agar like we had a cover page, like because reels में क्या होता है? Thumbnail. It asks you for that cover page. Yeah. So that can be similar, but then like I had just put one of my pages, जो मैंने reel बनाया था, वो it's time. That's what because it kind of matched the colors, so I just put that. So अगर हमारा बिल्कुल ही off है, तो maybe just to look good on our grid, we can just put any cover page thumbnail. Yeah. And lovely ma'am, you can actually it's use that different. the cover photo which you are talking about. You can also always use that to have the title of the topic of the reel, because that way your audience knows, when someone is visiting your page, they particularly know which one to watch, which topic is of their interest. So you can just have, for example, if 5 ways to detox, so instead of including that in the reel, you can have that as a cover image in the template green and white, which we've decided. Yep. Yes. Yeah.
And once we go in, we're not following any template because it doesn't make sense for Yeah, that. exactly. So if you just the cover picture can be in that template. Right, right. Priyash, just wanted to just reiterate. I'm sorry if I missed that part. So for this week's fun activity, the task we have reels as a part of it, right? Yeah, absolutely. Creating reels. Sure. Absolutely. I'll just upload that as well onto the task list, and those reels along with the existing content, that would be perfect. One thing's important as we are going forward कि हमें कोई specific अगर do's and don'ts हैं, especially don'ts, we need to know that. You know, जो ये करना ही नहीं है जब आप post कर रहे हो, तो that would be very helpful if there is such a thing. I think there's a handbook that Instagram itself has. Let me just kangalify my library and my assets. I'll find it out and I'll share it with you, Hitaishi. So if you can just possibly push up a reminder maybe tomorrow, and I'll just share it across I'll with do you. that. It's a I'll do that. complete Instagram guideline. It's Lovely, from ma'am. I'll Kickster, take it from and you can look Priyash at and it. team and I'll share with you. ठीक है. Yeah, that's important going forward. And we have to set our own do's and don'ts for our group. Yeah. कि क्या चीज हम करेंगे, जैसे हमने बात करी थी पीछे के we're a fitness you know and a health community, so what are the things, like I had said in recipes, absolutely no maida sugar recipes at all. You know, so that's just because we're not promoting that, so then it doesn't make sense to put those recipes. That's our own thing. एक जरूरी बात थी वो just escaped me. Yeah, so मुझे अभी तो we've just started, but मुझे लग रहा है कि हम too many topics हैं. That's not, and a target audience is never like everything. Isn't it like focus? I see maybe we're not going to have focus. There's too many things we're covering. As in terms of the content basket? Yeah, is that a concern or it's not a concern? No, I mean, initially you would need to have that sort of a variety so that you can attract different kinds of people, and then the iteration would actually begin. So at first we always go with a broader approach. We'll try putting up different kinds of content and topics, and then we'll start seeing which is giving you more engagement, which is driving more likes for you, and that's where you'll be able to iterate it further कि यार इस तरीके के ज़्यादा बेहतर तरीके से चीजें हो रही है. Make sense, ma'am? So initially we'll have to be trying out multiple different things before we make a conscious decision that this is something that will stop, this is something that we'll continue with. Got you. ठीक है. Thank you. Thanks. Yeah.